Hello students, welcome to Unacademy platform. This platform provides you daily live classes, structured courses, live test quizzes, and unlimited access on subscription. You can also download Unacademy Learning app, which is available on Google Play as well as Apple Store. And daily live classes, structured courses, live test quizzes, everything is available on this platform also. This is about me, and this is my Unacademy profile link. This is my Telegram link. If you have any doubt, any questions on my lectures, you can ping me here, and all those questions will be answered. Along with me, these are top educators on Unacademy platform, so you can watch their courses also. These are different subscription plans. So, for example, if you go with Plus, you have live classes, test series, unlimited practice, and structured schedule. If you choose Iconic, you have personal coach, daily mains question answer practice, study plan, personalized feedback. Plans have been changed, and now these are running plans. Okay, and all these plans are available at 10% discount if you apply the code AmitPS. Okay, again there are different plans of different durations. You can choose according to your requirement. These are available at 10% discount if you apply this very code, that is AmitPS. Okay, so today we are going to continue our discussion on the most important aspects of India's foreign policy. We have covered Indo-US relation. Okay, the changes that are in the offing because of the Biden acquiring the presidency here. And then we talked about India-China skirmishes. Okay, there we saw the opinions of Brahma Chelani. Okay, and Sumit Ganguly. In India-China, we have seen Surupa Gupta, Mitendu Patil, and Sumit Ganguly. Then we discussed Quad. Okay, and after that we saw a discussion on Quad 2.0. What is that and how that is important, how that is emerging, and how that is now has taken complete shape of a strategic alliance among the four countries, that is US, Japan, Australia, and lastly India. Okay, then we also saw the analysis whereby it was claimed that it is not only the Quad which is emerging, and it's not only these countries which are interested in ensuring rule-based international order and safety and security of Indo-Pacific. We also saw countries like Germany, France, UK. They are also interested in ensuring safety and security of sea lanes of communication and other concerns that are emanating because of the increasing Chinese expansionism in the area. Then we saw that all that is happening in this particular front is actually guided by something called free and open Indo-Pacific. Indo-Pacific. Okay, this was the vision put forward by Prime Minister Shinzo Abe, Japanese Prime Minister Shinzo Abe in the year 2016. I'm sorry. Okay, and that was something which now these countries have interest in realizing against this backdrop of increasing Chinese incursions and I'm sorry, its expansionist policy not only in South China Sea but also in Indo-Pacific region. ओके तो ये चीज़ है जो जिसके बैकग्राउंड में आपको ये देखना है. We also analyzed the recent trends that have been emerging in SCO, how that is important, इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी हमने
प्रीवियस डिस्कशन में देखा. देन वी हैड अ कंपैरिजन बिटवीन एससीओ एंड आसियान. ओके, उनके बीच में चार्टर में डिफरेंस क्या है, और हाउ कैन एससीओ बिकम another platform for increasing economic integration in the region. और ये भी देखा हमने उस कॉन्टेक्स्ट में कि कैसे इंडिया इज एन एसेट फॉर एससीओ, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया इज वेल प्लेस्ड इन द रीजन विच कैन कनेक्ट सेंट्रल एशिया विथ साउथ ईस्ट एशिया. तो एससीओ में इंडिया के पहुंचने के बाद एससीओ की रीच कहाँ पहुंच गई है, साउथ ईस्ट एशिया में भी पहुंच गई. साउथ एशिया तो ठीक ही है जहाँ पास इंडिया लोकेटेड है, बट बिकॉज ऑफ इंडिया एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर रीजन, यहाँ पास एससीओ की रीच अब साउथ ईस्ट एशिया में भी पहुंच गई है. ओके, फिर डिस्कशन में हमने सेटमैक्स के बारे में भी डिस्कस किया है. ओके, एंड हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम सिम्बैक्स. Well, we also discussed increasing cooperation between India and Taiwan. यहाँ पास हमने इंडिया ताइवान मिल्क टी अलायंस की बात की थी, मिल्क टी अलायंस. तो ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं. इनमें कोई भी डाउट हो, यू आर वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन हियर. ओके, आर यू गेटिंग इट? आज हम जिस चीज को शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया, दैट इज इमर्जिंग ट्राइलैटरल इंडो पैसिफिक. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो इंडो पैसिफिक क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें मैं आपको बहुत ज़्यादा बता चुका हूँ. ओके, आज हम इंडो पैसिफिक को और बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे. तो मैंने बहुत सारे डिस्कशन के जो पॉइंट्स यहाँ रखे हैं, ये इंडो पैसिफिक को एक्सप्लेन करने के लिए रखे हैं. इंडो पैसिफिक क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है. ओके, तो बहुत सारा डिस्कशन पहले ही हो चुका है इंडो पैसिफिक में, और उससे रिलेटेड जो इशूज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड वगैरह को हमने लेंथ में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. बस आज इसको और ज़्यादा फोकस में रखना है. ओके, आज हम ऑस्ट्रेलिया, आसियान, इनमें कुछ और भी बात करेंगे. ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलिया, आसियान, ऑल दैट इज रेलेवेंट फॉर इंडिया इन इंडो पैसिफिक रीजन. ठीक है, हमने सुमित गांगुली का एक और आर्टिकल और उनके एनालिसिस को बहुत अच्छे से कवर किया है, जहाँ पास उन्हें आरसीईपी के केस में डिस्कशन हुआ है. ओके, तो आरसीईपी इंडिया क्यों नहीं ज्वाइन किया, और क्या उसके रिपरकशंस हो सकते हैं, किस हद तक ये जस्टिफाइड था, किस हद तक ये करेक्ट फॉरेन पॉलिसी है, ये सब हम बहुत अच्छे से एनालाइज कर चुके हैं. सो इन दैट सीरीज वी आर गोइंग टू स्टार्ट India, France, Australia, which is a new emerging trilateral, okay, in Indo-Pacific. So let us start here. The first India-France Australia trilateral dialogue at senior official level was organized virtually on September 9, 2020. ठीक है, the inaugural dialogue was co-chaired by Indian Foreign Secretary Harshvardhan Singh, Secretary General, French Ministry for Europe and Foreign Affairs, Francois Delattre, and Francis Adamons, Secretary of Australia, Department of Foreign Affairs and Trade. So this is the inaugural dialogue that took place. Okay, these names are not important. This particular knowledge is enough, where you are seeing that inaugural dialogue is in the offing, and that is a new start in this particular trilateral between these two countries, that is between or among these three countries, that is India, France and Australia. The meeting focused on enhancing the trilateral cooperation in the Indo-Pacific to ensure a secure, peaceful, prosperous and rule-based region. So actually this is the main objective. This is the main objective why these countries are coming together, to secure rule-based region. Okay, and which region we are talking about? Indo-Pacific. कल मैंने आपको रिलीज थ्योरी ऑफ आईआर का एक जो इंटरप्रिटेशन यहाँ हो सकता है, वो मैंने प्रोवाइड किया था कि हाउ इंक्रीजिंग incursions and expansionism of China, okay,
ये क्या है, दूसरी कंट्रीज को एक ग्रुप में ला रहा है ताकि बैलेंस ऑफ पावर जो शिफ्ट हो रहा है चाइना की तरफ उसको फिर से रिशिफ्ट करके एक प्रॉपर बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पास मेंटेन कराया जा सके. Okay, so this is something that you learn in realist theory of IR, which has been propounded by Morgenthau, Hans J. Morgenthau, then Kenneth Walsh and John Mayer Schemer. Okay, और इसका जनक किसे कहा जाता है? The origin goes back to Thucydides. Okay, Thucydides. तो ये आप बेसिक्स पढ़ते हैं. हम एक्चुअली इसका अप्लाइड वर्जन यहाँ पास देख रहे हैं ताकि हम समझ पाए कि कैसे आईआर की थ्योरीज को अपने आंसर्स में, फॉरेन पॉलिसी के आंसर्स में यूज करना है. The key issues discussed during the meeting included their responses to COVID-19 pandemic, common economic and geostrategic challenges, and focus areas of cooperation, need for upholding and reforming multilateralism. What is the meaning of multilateralism? Countries increasingly are favor of multilateralism against something called unilateralism. मल्टीलैटरलिज्म का मतलब होता है, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स उन्हें बोलते हैं जिनमें बहुत सारी कंट्रीज, मतलब दो या दो से ज्यादा कंट्रीज जो है, देयर इज समथिंग कॉल्ड यूनिलैटरल, देन बायलैटरल, देन मल्टीलैटरल. यूनिलैटरल single-handedly controlled by any particular country. The unilateralism has been opposed by the countries lately. Bilateral means between two countries. Multilateral means among two and more among more than two countries. Okay. तो मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करना मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करना जिनमें दो से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व है. ओके, तो ये क्या होता है, ये मल्टीलैटरलिज्म क्या करता है, डेमोक्रेटिक इंटरनेशनल ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने में मदद करता है. दिस डेमोक्रेटिक इंटरनेशनल ऑर्डर मे बी द रिजल्ट ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड. ओके, थोड़ा सा मैं आपको, अगर आप बेसिक्स यहाँ पास मिस कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड क्या हुआ. वी सॉ द बाइपोलराइजिंग वर्ल्ड. ओके, बाइपोलर वर्ल्ड इमर्ज हुआ. बाइपोलर वर्ल्ड कैसे इमर्ज हुआ, एक कैंप में था यूएसए और दूसरे में था यूएसएसआर. ठीक है, फिर 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है और उसके बाद जो इसका इनहेरिटर स्टेट होता है रशिया, that was not as powerful as USA. So after bipolar war that lasted between Second World War and 1991, the time when USSR disintegrated, we saw after that, after 1991, we saw the emergence of unipolarity. Okay, and this unipolarity का time जो था, this was actually the time of American hegemony. American hegemony. Because in bipolar world there were two superpowers. First is USA, the second is USSR. But after the disintegration of USSR, USA remained the only superpower in the world. Okay, and in that context, it was not a superpower, but some experts called it to be hyperpower. Okay, तो 1991 के बाद हमने इमर्जेंस ऑफ यूनिपोलैरिटी देखा. लेकिन 1991 से रफली 2001 तक ये यूनिपोलैरिटी का टाइम रहा. उसके बाद एक्सपर्ट्स का कहना है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड विच इज इमर्जिंग. मल्टीपोलर वर्ल्ड विच इज इमर्जिंग. ठीक है, अब आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपसे कोई पूछे कि इट इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, यूनिपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड और बाइपोलर वर्ल्ड. So this issue has been analyzed well by experts, and one particular expert, in this case C. Raja Mohan, he says that it is a multipolar world, but poles are
different in their size and capability. So there has been the emergence of multipolar world. लेकिन है क्या कि जितने जो different poles हैं, but poles are not same. In bipolar world क्या था? Bipolar world जो था, तो उस केस में USA and USSR, there was a kind of rough equality between these two powers. Okay, I'm talking about their military strength and to some extent their economic strength also. But a multipolar world which is in the offing, okay, because of the emergence of various countries, okay, other than USA and Russia. So, for example, there are other countries in Western Europe, for example, Germany, France, Italy, then in other continents, for example, India, Japan, Australia, then South Africa, Brazil. All these countries are emerging powerfully, okay, and they are economic powerhouses in many sense. But again, you can't say that all these poles which are emerging and to a good extent they have already emerged, they are of equal strength. तो वो इक्वल नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि today's world is a multipolar world, but poles are not similar. Okay, so today's world is a multipolar world, but poles are not similar. Are you getting it? Poles are not similar. ये सबसे अच्छा आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि आज का जो वर्ड है ये मल्टीपोलर है कि बाइपोलर है कि यूनिपोलर है. आंसर क्या है? इट इज अ मल्टीपोलर वर्ड बट द पोल्स आर नॉट सिमिलर एंड दैट इज एनालिसिस ऑफ सी राजा मोहन. ठीक है, ओके. तो मल्टीपोलर मल्टीलैटरलिज्म क्या प्रमोट करेगा? मल्टीलैटरलिज्म प्रमोट करेगा एक मल्टीपोलर वर्ल्ड. इंडिया क्या चाहता है? इंडिया यूनिपोलैरिटी चाहता है कि मल्टीपोलैरिटी चाहता है कि बाइपोलैरिटी चाहता है? इंडिया हैज स्टेक्स इन मल्टीपोलर वर्ल्ड. ओके, मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक जो चीज बहुत साफ होगी वो होगा कि अगर रियलिस्ट थ्योरी के कॉन्सेप्ट से अगर आप इस चीज को समझना चाहें तो देयर विल बी बैलेंस ऑफ पावर अमंग कंट्रीज. ओके, and this balance of power will never shift in favor of any single country. That is one. Then a multipolar world will also ensure that no particular country is able to hegemonize the world. ये चीज नहीं होगा. ठीक है. तीसरा है there will not be any ideological conflict among states as was the case during Cold War. ठीक है. Multipolar world will also promote what? Dialogue and discussion among states for resolving disputes. तो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए वॉर या डोमिनेशन, ओके, या आप कहें सबजुगेशन या अलायंसेस और काउंटर अलायंसेस फॉर्म करना, ये सब चीजों की जरूरत नहीं होगी अगर डायलॉग एंड डिस्कशन हो रहा है. मल्टीपोलर वर्ल्ड विल definitely provide various multilateral fora so that states can interact with each other and can resolve their disputes through dialogue and discussion. This is something that India has been favorable to since the starting. Okay, तो मतलब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया एक्चुअली इसी चीज को प्रयोग करता आया है. ओके, तो आप समझ रहे हैं इन चीजों को. चलिए आगे चलते हैं. So the key issues discussed during the meeting, वो inaugural meeting जिसकी अभी बात कर रहे हैं, included their response to COVID-19 pandemic, common economic and geostrategic challenges, and focus areas of cooperation, need for upholding and reforming multilateralism, and promoting trilateral and regional cooperation through forums like ASEAN, Indian Ocean Rim Association, and Indonesian Commission. Okay, the important organizations in case of Indo-Pacific will also include groups like
Indian Ocean Rim Association, and Indian Ocean Commission. Okay, it was agreed to hold the trilateral dialogue annually. और ये trilateral dialogue countries कौन है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडिया. ओके, आगे देखिए. The trilateral is an addition to the already existing dialogues that India has in trilateral framework with strategic partners including Indonesia and Japan for building practical cooperation in the Indo-Pacific. तो एक दूसरा ट्राइलैटरल, यहाँ पास ट्राइलैटरल जो है इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा ट्राइलैटरल भी एग्जिस्ट करता है जिसमें क्या है, इंडिया, जापान और इंडोनेशिया. ये दूसरा ट्राइलैटरल है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और उसका भी क्या है, फॉर बिल्डिंग, उसका भी ये ऑब्जेक्टिव वही है, फॉर बिल्डिंग प्रैक्टिकल कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक. The idea of India-France-Australia trilateral was suggested by French President Emmanuel Macron while speaking at Garden Island in Sydney in 2018. Okay, so the initiative first came by France because in the previous discussions I have told you that France is actually um, taking a lot of interest in the Indo-Pacific region. Okay, and हमने देखा है कि एक प्रॉपर पॉलिसी और प्रॉपर डॉक्ट्रिन भी इमर्ज होते फ्रांस के केस में. ओके, इंडिया इंडो पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में. He had suggested a new Paris-Delhi-Canberra axis as a key for the region with joint objectives India-Pacific region. ओके, तो ये चीज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है. आपके एग्जाम के लिए ये स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है कि दिस इज कमिंग फ्रॉम इमैनुअल मैक्रोन, अ न्यू पेरिस-दिल्ली-कैनबरा एक्सेस. प्लीज नोट इट डाउन. मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे नोट करें अपने कॉपी में अगर आप PSIR के स्टूडेंट हैं तो. एज अ की फॉर द रीजन विद जॉइंट ऑब्जेक्टिव्स इन द इंडियन पैसिफिक रीजन. तो पेरिस दिल्ली कैनबरा एक्सिस का मतलब क्या है, यही तीन कंट्रीज जो एक्चुअली यहाँ पास इस रीजन में की रोल प्ले करेंगे. किस रीजन में, इंडियन पैसिफिक रीजन में. Also, the academic community has been recently proposing the idea of exploring the possibility of such trilateral arrangements. So the initiative came from political level, okay, but this was something which was being suggested by academic community also. The new trilateral aims at building on the existing robust bilateral relationship between three countries. तो आप जानते हैं कि इंडिया shares very good trade relations with Australia, and India has also been able to manage cooperation with France also. So for example, जैसे आप जानते हैं कि France is a permanent member of United Nations Security Council, okay, and France has been in favor of forwarding support to India for its candidature in United Nations Security Council as a permanent member. तो फ्रांस शुरुआत से ही इंडिया के कंटेंडरशिप को, इंडिया के क्लेम को एक्सेप्ट और उसे सपोर्ट करता है. ठीक है, किस क्लेम को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने की क्लेम को. इंडिया हैज क्लोज रिलेशन विद फ्रांस. द टू आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स सिंस 1998. ठीक है, अनदर इंफॉर्मेशन विच इज रेलेवेंट फॉर यू इन योर एग्जाम. ओके, आपके आंसर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. India's ties with Australia have significantly progressed in recent years. तो फ्रांस के साथ ये केस है और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी टाइज जो है और लगातार प्रोग्रेस में है. During the recent India-Australia Leaders Summit held virtually on 4th June 2020, the relationship was elevated from strategic partner since 2009 to comprehensive strategic partnership based on mutual understanding, trust, common interest, and shared values of democracy. Again, a very important fact for your exam. ठीक है, the relationship between France and Australia is also strong. ठीक है, इसीलिए इस तरह के ट्राइलैटरल पॉसिबल है. कौन कौन से, इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया. बिकॉज इंडिया, you have seen that is a strategic partner of France, and
is also a strategic partner of Australia, and that strategic partnership has been elevated from strategic partnership level to comprehensive strategic partnership. Okay, in the year 2020, the two countries signed the joint statement of enhanced strategic partnership in 2017 to strengthen engagement in Indo-Pacific region. कौन सी two countries? France and Australia. So they signed a joint statement of enhanced strategic partnership in the year 2017 to strengthen engagement in the Indo-Pacific region. In the recent years, the rise and increasing salience of the Indo-Pacific, increasing importance of Indo-Pacific in regional and global discourses have played a significant role in shaping this new trilateral that exists between or among India, France, and Australia, which will likely be a factor in determining regional balance of power. Okay, the regional balance of power जो शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है किसकी तरफ? चाइना की तरफ. ओके, और इसी वजह से मैंने बताया कि वेरियस ऑफ द स्टेट्स आर कंबाइनिंग देयर स्ट्रेंथ, ओके, whereby they could avoid the problems and issues emanating out of Chinese expansionism. In that case, this trilateral should also contribute in that particular direction. And here it is being said that this trilateral is going to be a factor in determining the regional balance of power. तो रीजनल बैलेंस ऑफ पावर फिर क्या होगा? रीजनल बैलेंस ऑफ पावर फिर से शिफ्ट होगा, एंड जो ऑलरेडी कहाँ इंक्लाइन कर रहा है इस टाइम? चाइना की तरफ, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एक्सपेंशनिज्म ऑफ चाइना. आगे देखिए, as a France ambassador in India tweeted after the dialogue, together we will uphold our values and interest. And what are those values? You know that India, France, ऑस्ट्रेलिया, जिनके बीच में ट्राइलैटरल की हम बात कर रहे हैं, ऑल्सो शेयर वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, कंसर्न फॉर ह्यूमन राइट्स, सेकुलरिज्म, ओके, इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ओके, लिबर्टी. और ये सब चीजें क्या है? चाइना के कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें मिसिंग है. चाइना के कॉन्टेक्स्ट में चीजें मिसिंग है. ओके, तो बहुत सारी कंट्रीज, जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड का भी एक स्ट्रैटेजिक एंगल तो है, बट व्हाट इम्पेल्ड दीज कंट्रीज टू कम टुगेदर to have this kind of mechanism whereby they could cooperate and pool their strength to counter the expansionism of China? One very important factor was the common values. Okay, one very important factor was common values. हेलो निरंजन कुमार, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, ठीक? There are complementarities in the vision of three democracies, that is India, France and Australia, for the region, which broadly emphasize on free and open, inclusive, rule-based Indo-Pacific. ये चीज़ें आप एक्चुअली नोट किया करें. यही टर्म्स और फ्रेजेस हैं जो आपको यूज करने होते हैं आंसर्स में. प्लीज नोट दिस ऑल्सो. तो किनका, तीनों का क्या, इन तीनों डेमोक्रेसीज का एम्फेसिस कहाँ है? फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक. ओके, India is a crucial player in Indo-Pacific. The Australian strategic community has been taking particular interest in Indo-Pacific construct. Australia, with its unique geographical location, a bridge connecting the Indian and Pacific Oceans with a two-ocean navy, has an enduring interest in the peace, stability and economic prosperity of the strategic arc. तो देखिए, इंडिया इज अ क्रूशियल प्लेयर इन इंडो पैसिफिक. ये कैसे आप जानते हैं? सो फॉर एग्जांपल, इफ यू गो बाय द 2016 मैरीटाइम डॉक्ट्रिन रिलीज बाय इंडिया, इंडिया क्लेम्स फॉर इटसेल्फ as a role of net security provider. Now,
which countries are called net security provider. Now, if India is a country which claims itself the status of net security provider, that would mean that it is responsible for the security of not its own interest alone, but it will also be able to, or it will also be responsible for the security of all the littoral states in the Indian Ocean region. Okay, okay, that is about Indian Ocean. And what about Indo-Pacific? You know that we are having uh, very good relations with countries like Japan, USA, Australia, and we have increasing stakes in places like South China Sea, East China Sea, and other contiguous regions. We also have something called Act East policy. So India's increasing overtures in the Pacific region or Asia Pacific region also make it a very important player in the Indo-Pacific region. ठीक है, तो ये इंडिया एक बहुत क्रूशियल प्लेयर है उस सेंस में इंडो पैसिफिक रीजन का. समझ रहे हैं आप इस बात को? चलिए ठीक है, चलिए देखिए इसको आगे भी देखिए फिर. आगे देखिए. The Australian strategic community has been taking particular interest in the Indo-Pacific construct. ठीक है. Australia with its unique geographical location, a bridge connecting the India and Pacific. समझ रहे हैं? तो आप जानते हैं, अगर आप मैप देखेंगे तो this is Asia, okay, this is Indian Ocean, this is Pacific Ocean, this is Japan somewhere, this is Australia. In that sense, it is a bridge between Pacific Ocean and Indian Ocean. Okay. The unique geographical location is a bridge connecting the Indian and Pacific Ocean, and with a two-ocean navy has an enduring interest in the peace, stability, and economic prosperity of this particular strategic arc. So, what is that strategic arc? Indian Ocean, Australia, Pacific Ocean. This is the strategic arc that we are talking about. Getting it? आगे आइए. France, on the other hand, recognizing geopolitical shift, has begun to stress on its identity as an Indo-Pacific nation and willingness to strengthen its partnership with major players. So, ये आप समझिए कि फ्रांस की जहाँ तक बात है, France has been historically an important player in Indian Ocean. Okay, and now because Indian Ocean and Pacific Ocean are being projected as a continuous fluid, that is why it is also thinking of itself as an important player in Indo-Pacific region and not only Indian Ocean. Okay, तो क्या कैसे इंडियन ओशन में अगर बात करें तो हाउ इट इज an important player, because I know because we know that it has been a colonial power and still in some of the islands in Indian Ocean France has considerable stake. Okay, so historically it is an important player in this particular region, and now it is asserting itself or asserting its identity as an Indo-Pacific nation, and that is very much visible in his vision of Indo-Pacific and also in its policies and doctrines that it is coming out with in context of Indo-Pacific. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पुराने लेक्चर्स में भी, ठीक है. And willingness to strengthen its partnership with major players in the region, and those major players may include countries like India, Australia, okay, then other countries like Japan, South Korea. Nonetheless, USA will always be there as important community, and various players in ASEAN community. Okay. France, though geographically not a part of Indo-Pacific, but policy discourses within France identifies her as a nation of Indo-Pacific. समझ रहे हैं? तो पॉलिसी डिस्कोर्सेस का वही मतलब है जैसे मैंने आपको बताया कि द काइंड ऑफ पॉलिसीज and doctrines
that France have been coming out with, okay, with regard to Indo-Pacific, that is something which provides France an identity as a nation of Indo-Pacific. France has overseas territories in Indian Ocean as also in Pacific. ओके तो बहुत सारे जब कॉलोनियल पावर जब था उसी के टाइम से पैसिफिक ओशन में भी और इंडियन ओशन में भी बहुत सारे आइलैंड टेरिटरीज. France and Security in the Indo-Pacific, published in May 2019 by the French Ministry of Armed Forces. Very important information for your answers. Emphasize that France has almost 9 million square kilometers of exclusive economic zone. 1.6 million French citizens live in French overseas departments and territories, and the country has stationed overseas armed forces and permanent military basing to fulfill the security responsibilities of resident power of the Indo-Pacific. ध्यान रखिए, and this particular thing makes France an important player in Indo-Pacific. ठीक है. समझ रहे हैं आप इस बात को? तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसका किसके हमारे पास इंडो पैसिफिक में कितना 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. फिर 1.6 मिलियन फ्रेंच सिटीजन्स हैं जो फ्रेंच ओवरसीज में रहते हैं और जो कहाँ वो टेरिटरीज कहाँ है इंडो पैसिफिक रीजन. विथ ऑल दैट in background, how can anyone claim that France is not a player in Indo-Pacific? So France is very much a player in Indo-Pacific. All these data proves it. Okay. ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी क्या है एक ब्रिज है किसके बीच में पैसिफिक ओशन के बीच में और इंडियन ओशन के बीच में. ठीक है. आगे देखिए. A key factor that has influenced the geopolitical churning in the region in recent years has been the increasing assertiveness of China. I already explained you that this is actually the most important factor, or the Chinese expansionism. This is the most important factor why countries like France, Germany, UK, USA, Australia, Japan, South Korea, all these are having more and more interest in ensuring the rule-based international order in Indo-Pacific region. Okay. द की फैक्टर देखिए फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज हमेशा से उनके लिए इंडो पैसिफिक रीजन इंपॉर्टेंट था, लेकिन उनका ये इंक्रीजिंग assertion for this kind of trilateral and other kinds of bilateral and multilateral arrangements in Indo-Pacific is guided by this particular concern, which is increasing assertiveness of China. Okay, तो ये एक एक्चुअली की फैक्टर है. आगे देखिए. About which there is certain convergence of concerns in all three countries, that is France, Australia and India. ठीक है. The regional geopolitical environment has already been undergoing unprecedented transformation. So geopolitical environment जो regional है that is undergoing unprecedented transformation, and COVID-19 pandemic has accelerated that change. ठीक है. As anti-China sentiment rises in the wake of pandemic, many sore points have emerged in Australia-China relations. The anti-China sentiments आप जानते हैं कि because of the origin of the pandemic is to be found in wet market of China. Then there are various other issues. Chinese assertiveness is very much visible in dealing with Australia also. The anti-China sentiment is something which are not unique to Indians. Okay, ये दूसरी countries में भी है. And on the other hand, the meeting comes at a time when India and China are in standoff on line of actual control in Ladakh region that has persisted over
months. तो आप जानते हैं this is the ongoing scuffle, that is skirmish, border skirmish in Galwan region, Galwan Valley. France, though apprehensive about the assertive attitude of China, but has kept a relatively low profile on China. तो फ्रांस क्या है, आप देखेंगे although it is making certain attempts in this particular direction. So for example, coming out with this kind of trilateral mechanism, okay, with New Delhi and Canberra, but that shows its apprehension, but it has not been having very high profile with respect to China. Means it is not doing anything which is directly in conflict with China, which will ask or which will invite Chinese urge or Chinese uh, aggression against France. Okay, Chinese anger against France. So that is something which has not been attempted by France. तो फ्रांस एक मतलब एक समझिए कि चाइना के कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को लो ही रखा है, लो प्रोफाइल ही रखा है, हालांकि वो एप्रीहेंसिव है। और उसका एप्रीहेंशन कहाँ क्लियर रूप में दिखता है, जब वो ट्राइलैटरल मैकेनिज्म, इस तरह के ट्राइलैटरल मैकेनिज्म्स की बात कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है कि न्यू दिल्ली, पेरिस और कैनबरा को क्या करना चाहिए, साथ आके इंडो पैसिफिक रीजन में रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो उससे उसका एप्रीहेंशन दिख रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में, चाइना के असर्टिव एटीट्यूड के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन उसके बाद भी उसने चाइना के कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को लो प्रोफाइल रखा है, मतलब बहुत खुल के चाइना के अगेंस्ट नहीं आ रहा है। मतलब ये ऑन द होल चाइना certainly is an important factor in bringing the three countries together in trilateral setup, as I have already explained you. Maritime cooperation will be a crucial area of focus as the trilateral relationship evolves in coming years. So maritime cooperation will be a crucial area of focus. किसके बीच में, इन्हीं तीन कंट्रीज के बीच में, फ्रांस, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, एज द ट्राइलैटरल रिलेशनशिप इवॉल्व्स इन कमिंग ईयर्स। तो हमने इवोल्यूशन देखा ना, फॉर एग्जांपल क्वाड का भी हमने इवोल्यूशन देखा, ओके। तो क्वाड मिनिस्ट्रियल लेवल में कन्वर्सेशंस और डायलॉग्स वो एक्चुअली अभी रिसेंटली ही शुरू हुए। तो इसी तरह इस ट्राइलैटरल में जो हाईएस्ट ऑफिशियल लेवल्स में अभी टॉक है, अभी वो मिनिस्ट्रियल लेवल में जाने हैं। तो वो क्या कहलाएगा, वो इस ट्राइलैटरल रिलेशनशिप का इवोल्यूशन कहलाएगा। और वो इवोल्यूशन जो शेप लेगा वो मैरीटाइम कॉर्पोरेशन का, मेनली मैरीटाइम कॉर्पोरेशन का ही होगा। ओके, तो आप इवोल्यूशन को यहाँ पर समझ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ G20 का, हालांकि मैंने प्रीवियस डिस्कशन में भी दिया है। तो G20 का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर ग्रुप इवॉल्व सिंस 2008 बिकॉज अर्लियर द इंटरेक्शन वाज only at the level of maximum central bank governors. Okay, but after 2008 financial crisis, when the domain of this particular group, okay, got widened to include the concerns of socio-economic development also, then the interaction level, summit level dialogue, where leaders of 19 countries and European Union started interacting or starting taking part in this very annual summit. ओके, सो ये क्या हुआ, यहाँ पास G20 का इवोल्यूशन दिखाया गया, क्वाड के कॉन्टेक्स्ट में भी मैंने इवोल्यूशन बताया। तो उसी तरह ये ट्राइलैटरल रिलेशनशिप इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की भी इवॉल्व होगी। ओके, क्योंकि आपने अभी ऑफिशियल लेवल में, ऑफिशियल्स के लेवल में इंटरेक्शन देखा है, अभी मिनिस्ट्रियल लेवल में ट्राइलैटरल ग्रुप का इंटरेक्शन होगा, ओके, फ्यूचर में, और वो इवोल्यूशन को शो कर रहा होगा। और जब ये इवॉल्व होगी तो वो किस तरह के डायमेंशंस एक्वायर करेगा कॉपरेशन के टर्म्स में, वो मैरीटाइम कॉपरेशन के टर्म्स में डायमेंशंस को एक्वायर करेगा। ओके, मैरीटाइम ग्लोबल कॉमन्स वाज वन ऑफ द की एरियाज डिस्कस्ड ड्यूरिंग द इनॉग्रल मीटिंग व्हिच हैपेंड एट द लेवल ऑफ ऑफिशियल्स। तो ग्लोबल कॉमन किसे बोलते हैं, जैसे ओशन, environment, all that is global common. India is engaged through regular bilateral maritime dialogues and bilateral naval exercises with both Australia and फ्रांस। अगर बायलैटरल लेवल में देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी और फ्रांस के साथ भी मैरिटाइम एंड नवल मैरिटाइम डायलॉग्स हैं और नवल एक्सरसाइजेस भी हैं। Earlier in March 2020, India and France conducted the first joint coordinated patrol exercises
while back, okay, in the reunion island, which until now Indian Navy has only conducted with maritime neighbors. Another important fact for your answer. India and Australia announced a significant joint declaration on shared vision for maritime cooperation in the Indo-Pacific during a recent bilateral summit in June 2020, recognizing that many of the future challenges are likely to occur in and emanate from the maritime domain. तो ये इंडिया फ्रांस के केस में हुआ वाइल्ड एक्सरसाइज इन द रीयूनियन आइलैंड and this was something which happened first time between India and France because this particular kind of mechanism was being conducted between India and maritime neighbors only. Okay, then this is about India and Australia, which is a joint declaration on shared vision for maritime cooperation in the Indo-Pacific during a recent bilateral summit in June 2020, recognizing that many of the future challenges are likely to occur in and emanate from maritime domain. तो दोनों केस में क्या है मैरीटाइम कॉपरेशन ओके मैरीटाइम कॉपरेशन के ऊपर फोकस कहाँ है मैरीटाइम कॉपरेशन के ऊपर क्यों क्योंकि यहाँ पास रियलाइजेशन ये है कि जो फ्यूचर चैलेंजेस जो है that will emanate from and will occur in maritime area or maritime domain. ठीक है The much awaited agreement on an arrangement concerning mutual logistic support was also signed during the India-Australia Virtual Bilateral Summit, which will boost defense cooperation by enhancing military interoperability and joint capacity in maritime domain awareness. ठीक है तो एक्चुअली आप जानते हैं जब लेमोवा साइन हुआ था किसके साथ यूएसए के साथ इंडिया ने यूएसए के साथ लेमोवा जब साइन किया था लॉजिस्टिकल एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट तो वहाँ क्या है वो बोला जा रहा था कि इंडिया if not a complete ally at least has become a logistical ally of USA. ठीक है तो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट जो साइन हुआ ओके वर्चुअल बायलैटरल समिट में this also makes India and Australia if not complete ally then at least logistical ally because there will be full cooperation in sharing the logistics in this particular region okay which will promote what interoperability okay तो इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना ही तो एक्सरसाइजेस का भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है जॉइंट एक्सरसाइजेस और इस तरह के एग्रीमेंट्स पे क्या करेंगे मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाएंगे ओके और जॉइंट कैपेसिटी को बढ़ाएंगे इन मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर आंसर्स ध्यान दीजिए ये सारे के सारे मेरा डिस्कशन का पॉइंट यही है कि आपको यहाँ पास इंपॉर्टेंट फैक्ट मिले और इंपॉर्टेंट एनालिसिस मिले जो आप यूज कर पाए आंसर्स में आगे देखिए
Mutual logistics support may allow a possibility for India and Australia to use each other's strategically located island territories, that is, India's Andaman Nicobar Island, closer to Malacca Strait, and Australia's Cocos Island, located in Indian Ocean in close proximity to Lombok, Sunda, मकसर स्ट्रेट्स। अब देखिए यहाँ पास कि जैसा कि मैंने बताया कि आई कंपेयर इट विथ logistical exchange memorandum of agreement that has been signed between India and USA। ठीक है, उसी तरह का जो ये म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है, this will allow a possibility for India and Australia to use each other's strategically located island territories, that is India's Andaman Nicobar Islands closer to Malacca Strait, आप जानते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड को, okay, and Australia's Cocos Islands located in Indian Ocean in close proximity to Lombok, Sunda and मकसर स्ट्रेट्स। तो मतलब सब सिंपल मतलब है कि जैसे ये म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट क्या है, इंडिया की कुछ कंट्रोल एरियाज हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जो उसके ऑस्ट्रेलिया के कंट्रोल में। इंडियाज लॉजिस्टिक्स अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर आइलैंड will be accessible to Australia. Australia's logistics available in this particular island will be accessible to Australia's logistics will be accessible to India. In that sense, it will boost the capacity of these two countries if they are pooling this particular resource, okay, together. A similar reciprocal logistics support agreement was also signed between India and France in 2018, which seeks to extend logistical support on reciprocal access to respective facilities for the Indian and French armed forces. तो 2020 में इस तरह का एग्रीमेंट हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया और 2018 में ये एग्रीमेंट हमने फ्रांस के साथ ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। During the French president's state visit to New Delhi in March 2018, the two countries agreed on joint strategic vision for India-France cooperation in the Indian Ocean region against shared concerns and also expressed willingness to partner with other like-minded countries in the format of trilateral dialogue। तो जब फ्रांस प्रेसिडेंट की विजिट हुई थी दिल्ली में 2018 में, India and France agreed for joint strategic vision for India-France cooperation in Indian Ocean region. This is similar to the one that we signed with USA in the year 2015 when Obama was invited as a chief guest in your Republic Day. Okay, so again a very important fact for your answers, आप चाहें तो इसे नोट कर लें। Against the shared concern, और shared concern वही कौन है? The indication is towards China, and also expressed willingness to partner with other like-minded countries in the format of trilateral dialogue. Okay, so that was something which happened in the year 2018 itself. These agreements mark a significant step forward in India's engagement with strategic partners for maritime security in Indian Ocean region। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये अगर आप इनको और थोड़ा सा डीपली यहाँ देखें इस कंसर्न्स को, तो यहाँ पास कॉमन कंसर्न तो है, कॉमन कंसर्न इन कंट्रीज का है, ओके, लेकिन कॉमन कंसर्न क्या है? चाइना के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन चाइना को एंटागोनाइज करने के लिए कौन सी कंट्री कितना विलिंग होगी, ये पर्टिकुलर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करने में कि इंडिया किन कंट्रीज का रियल प्रैक्टिकल सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकता है चाइना के साथ एक रियल फाइट में। दैट इज समथिंग विच इज मोस्ट रेलेवेंट टू इंडिया, and that is something that
we are doubtful whether countries like France and Australia will really be willing to cooperate India to that extent. मतलब ये है कि will they be able to or will they be ready to lock horns with or against China, okay, for cooperating with India. ये कुछ यहाँ पास क्वेश्चन मार्क है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में. लेकिन तब भी that doesn't mean that we should not promote this kind of bilateral, trilateral and multilateral fora in order to have cooperation with these countries in Indo-Pacific region. We should continue doing or promoting this kind of ongoing cooperation. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. An increasing convergence of interest in the maritime realm offers scope for deepening cooperation to secure the global commons and cooperatively support economic prosperity. तो यहाँ पास इंक्रीजिंग कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इंक्रीजिंग कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है किस कॉन्टेक्स्ट में? इस मैरीटाइम रियाल में, इंडो पैसिफिक में. And that is why this offers for what? Offers for deepening cooperation to secure global commons. Global commons यहाँ पास oceans को refer किया जा रहा है. And cooperatively support economic prosperity for all players in the region. ठीक है? आगे देखिए. As India endeavors to strengthen economic relations and develop in Indian Ocean region in a mutually supported and cooperative manner under the vision of Sagar, that is security and growth for all. You know about this particular initiative? Security and growth for all. This is the initiative of India. Okay. And how the Indo-Pacific Oceans Initiative, France and Australia could be crucial partners for India bilaterally and also in trilateral setting. Okay, again important point, क्योंकि यहाँ पास आपको सागर इनिशिएटिव के बारे में पता होगा. सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. दिस गोज along with India's vision of India claiming itself as a role of net security provider. Okay, and this vision of Sagar, that is security and growth for all in the region, goes or it is synchronous with India becoming the net security provider in Indian Ocean region. And now the Indo-Pacific Ocean Initiative. This is also an initiative, okay, where France and Australia, India can start cooperating, and there is a huge scope for promoting cooperation bilaterally and multilaterally. ठीक है, आगे देखिए. Major focus areas for engagement could include maritime domain awareness, surveillance, combating piracy and counterterrorism, HADR, SAR, blue economy, preserving maritime ecology, logistic support and increased interoperability. ठीक है. अब देखिए इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पास आपको एक चीज याद रखनी है कि although as I told you the real question is that which countries will be able to really assist in India materially if India develops any kind of skirmish with China. And the present ongoing skirmish in Indian Ocean region, I'm sorry, in
India's border with China is an example that we can't expect these countries to be helpful to India materially and physically, which could bring them in direct conflict with China. Okay, but that doesn't mean that India should stop cooperating with these countries. Okay, even their cooperation in the maritime domain will increase India's importance in the region, which will assist India in asserting itself in this particular region more forcefully, especially against China. And that is something that you should actually be focusing on. तो यहाँ पास वही मुझे जहाँ पास इंडिया जिन वजहों से इंडिया अपने आप को बहुत मेजर वे में यहाँ पास अपने आप को एसर्ट कर सकता है, वो सारे फोकस एरियाज कौन से हैं इंगेजमेंट के लिए? वो हैं मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, सर्विलेंस, कॉम्बैटिंग पायरेसी, काउंटर टेररिज्म, HADR, दैट इज ह्यूमन ह्यूमन HADR, humanitarian assistance and disaster relief. Disaster relief. What is SAR? SAR is search and rescue. Okay. Then blue economy. What is blue economy? This is sustainable use of marine resources. That means fish and other fisheries and other resources. Preserving marine ecology, logistics support, and enhanced and increased interoperability. So all that is something which are going to be focus areas. आगे देखिए. Amidst the rapidly changing geopolitical landscape, the Delhi-Paris trilateral is a crucial one to look forward to. तो rapidly changing geopolitical landscape क्या है? This includes Chinese incursions, Chinese expansionism, then India's effort to bring countries like Japan, Australia, USA in this particular region to ensure the safety and security of this region. Second, third, and that is very much visible in area of Quad, which is adding a new dimension, that is Quad 2.0. ठीक है? फिर we have also seen ASEAN taking interest in this particular region. Okay, and we have also seen furthering cooperation between India, Taiwan, India, Singapore, India, Thailand. Okay, तो ये नए डोमेन्स जो निकल रहे हैं, but not to forget that along with Japan, South Korea can also be a potential major player, although it is yet to come on board with India in such kind of trilateral or even bilateral dialogue. Okay, so that is something that we should be careful about, and we should also try to bring South Korea on board, क्योंकि जापान है already bilateral sense में भी और quad में तो है ही. We can bring South Korea also, because South Korea is also a country which shares India's concerns with increasing Chinese incursions and assertiveness and expansionism.
इन दिस पर्टिकुलर रीजन। मतलब क्या है कि साउथ कोरिया ने भी चाइनीज असर्टिवनेस को सफर किया है और कुछ हद तक वल्नरेबल भी है। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा है कि ही हैज नॉट बीन वेरी मच विलिंग इन फॉरवर्डिंग सपोर्ट टू यूएस एलीज, ओके, ट्रेडिशनल यूएस एलीज। लेकिन दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू चेंज अंडर बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये थोड़ा सा यहाँ पास इसकी दिक्कत, ये दिक्कत आएगी, लेकिन तब भी यहाँ पास बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। ओके, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इसे देखना है। As the Indian Ministry of External Affairs press release noted, the outcome-oriented trilateral dialogue provide an opportunity for the three sides. Again, I will tell you that these kind of remarks are actually helpful in making your answers better. As the Indian Ministry of External Affairs press release noted, the outcome-oriented trilateral dialogue provide an opportunity for the three sides to utilize common values and interests to synergize efforts to enhance cooperation in the Indo-Pacific region. ठीक है? So this shows the importance of trilateral forum. Getting it? So this particular issue was related to India, Australia, France, trilateral that is emerging in this particular region, that is Indo-Pacific, because all these countries are focusing more and more in increasing Chinese incursions as well as assertiveness in this particular area. So they are perceiving China as a common challenge. तो जिस तरह से हम क्वाड के केस में देखते हैं कि because all the countries in this particular grouping are wary of Chinese assertiveness, increasing assertiveness, similarly these countries, that is India, France, Australia, or in this particular trilateral, are also having same concerns with regard to China, and that is something which has made them uh, concerned about the security of this particular region. ऑस्ट्रेलिया क्यों यहाँ पास एक मेजर प्लेयर है? बिकॉज इट इज अ ब्रिज बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। और फ्रांस कैसे एक मेजर प्लेयर है? बिकॉज फ्रांस मिलियंस स्क्वायर ऑफ किलोमीटर ऑफ ईईजेड जो है, ये कहाँ है? इंडो पैसिफिक रीजन में है फ्रांस की, जिसके इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में दोनों जगह का है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं जहाँ उसका कंट्रोल है, और एक्चुअली उसी वजह से उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स भी हैं। फिर फ्रांस के इन दो पर्टिकुलर रीजन में सिटीजन्स भी हैं, ठीक है? तो दैट इज वाई फॉर ऑल दिस रीजन्स फ्रांस हैज बीन asserting itself as an important player or is trying to insert its identity as a major player in Indo-Pacific region. ठीक है? Okay, so let us talk about this particular area. That is, you know that the recent ASEAN summit took place. Okay, India ASEAN summit, and what particular changes are in the offing, and how they are going to decide about the further course of action that India should take in this particular regard. Okay, ये हम यहाँ पास सीखेंगे. The Ambassador Gurjeet Singh, that you find his analysis in platforms like ORF, Observe Research Foundation, then other magazines, for example The Diplomat. ठीक है? Then there are lectures also. यहाँ पास इनके lectures आपको Ministry of External Affairs की वेबसाइट में इनके lectures भी मिलेंगे under this distinguished lecture series.
So there you are going to find a good analysis. तो आसियान के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर आसियान का कंपैरिजन हम पुराने डिस्कशंस में एससीओ के साथ कर चुके हैं. ओके, आसियान के इकोनॉमिक सेंस में कैसे डिफरेंसेस हैं एससीओ के साथ वो हम दे चुके हैं, एंड हाउ एससीओ considers India as an important player, a valuable asset which could connect SCO with ASEAN. ये सब हम समझ चुके हैं. ओके, तो आसियान के बारे में जो कल सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो हम जानते हैं कि यहाँ पास का चार्टर क्या है. ये पीसफुल वैल्यू बेस्ड कोऑपरेशन के लिए प्रमोट करता है कंट्रीज को. देन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी यहाँ पास बहुत अच्छा है. वी नो दैट ऑलमोस्ट 27% ऑफ द ट्रेड जो है वो इंट्रा आसियान ट्रेड है. अगर इन मेंबर कंट्रीज का ग्लोबल ट्रेड देखा जाए उसका 27% ट्रेड इंट्रा आसियान ट्रेड है. एससीओ में वो फिगर सिर्फ 5% है. आप ध्यान रखें कि ये 5% फिगर सार्क के केस में भी है, मतलब इंट्रा आसियान ट्रेड वगैरह बहुत अच्छा है. सो यू कैन से दैट अदर देन यूरोपियन यूनियन, any single example of a successful regional grouping उसमें आसियान का नाम आता है. तो बहुत सक्सेसफुली उसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है एक रीजनल ग्रुप के तौर पे. ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट वी शुड बी केयरफुल अबाउट, ओके, इन एनालाइजिंग आसियान. और हम देखते हैं कि समिट जो रीजनल समिट हुई और उसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं. द आसियान इंडिया समिट, अ न्यू डायरेक्शन इमर्जेस. ठीक है, the Diwali celebration this year coincided with the Association of Southeast Asian Nations Summit, the East Asia Summit, and related meetings with dialogue partners. तो एशिया समिट को भी मैं अलग से एनालाइज करूंगा, तो इसके लिए भी मेरे पास अलग कंटेंट है. ओके, द 17th ASEAN India Summit was co-chaired by Prime Minister Modi and ASEAN's current chair Prime Minister Nguyen Xuan of Vietnam on 12th November 2020. ठीक, the ASEAN-India strategic partnership is an important part of India's Act East policy. ठीक है, you know that this took shape in the year 2014, was a refurbished version of Low East policy of India, especially since India has chosen not to join the recently signed Regional Comprehensive Economic Partnership. We already analyzed this particular issue with views coming from Sumit Ganguly and Surupa Gupta. ये सब चीजें मैं already analyze कर चुके हैं. But this year, Prime Minister Modi gave primacy to the Indo-Pacific region. Okay, so in this particular summit, RCEP was not an issue. Even Act East policy was not an issue. The issue which was made or which was given importance by Indian leadership was in Indo-Pacific region. That's because a cohesive, responsive, and prosperous ASEAN is seen as a vital to India's Indo-Pacific vision and security and growth for all in the region. You know that Indo-Pacific vision जो है इंडिया का और सागर इनिशिएटिव जो है इंडिया का, इन दोनों के लिए क्या है, कोहेसिव, रिस्पॉन्सिव एंड प्रॉस्परस आसियान वाइटल माना जा रहा है. ओके, गेटिंग इट. So why ASEAN is important now with regard to Indo-Pacific, with regard to India's concerns with Indo-Pacific region? It is because of India's it is because of its vital importance in India's Indo-Pacific vision and its Sagar initiative. ठीक है, security and growth for all in the region initiative. On the trade and investment, India emphasized the need for regional value chains. In the first article itself, we have talked about regional value chains, a factor that influenced India's withdrawal from RCEP, which was finally launched on 15th November 2020. Actually, एक बहुत बड़ा रीजन जो साइट किया जा रहा था कि why India should join RCEP was this, that RCEP would allow India to become part of global value chains.
ठीक है, ग्लोबल वैल्यू चेन्स. And India did not join RCP, and according to some experts, it was believed that now India will be losing on this particular front, that it will not be able to become part of global value chains. But India is emphasizing on regional value chains. ठीक है? India now needs to push for suitable review of India-ASEAN FTA, that is Free Trade Agreement, and to secure its vital interest in services using reciprocity and reciprocity appropriately. Actually, हुआ क्या कि this was the opinion of Sumit Ganguly also. If you have watched my previous lectures, then I have told you that there Sumit Ganguly emphasized over review and revision of existing FTAs. तो India here this particular instance, पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि इंडिया ऑलरेडी क्या है, एक FTA पार्टनर है. किसका? आसियान का. यहाँ किस चीज की बात हो रही है? यहाँ उस एफटीए के रिवीजन की बात हो रही है. और एफटीए के रिवीजन मतलब किस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? वो सर्विसेज के कॉन्टेक्ट. और सर्विसेज में भी हमने पहले भी हम एनालाइज कर चुके हैं इस इशू को. हमने देखा है क्रॉस मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स के कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है. And this is something that ASEAN countries have not been willing to give much concessions to India. और इंडिया का कंपैरेटिव एडवांटेज यही लाइक करता है कि यहाँ के इंडियन प्रोफेशनल्स कुड वर्क अब्रॉड, ओके, इन दीज कंट्रीज. फॉर एग्जांपल टीचर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, नर्सेज हैं, ओके, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं. तो ये इंडिया में बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं इस तरह. अगर उनका क्रॉस मूवमेंट प्रोफेशनल्स का अलाउ किया जाए तो इंडिया को यहाँ पास एडवांटेज मिलने वाला है. लेकिन this kind of concessions will require the change in their migration policies, and that is something that countries in ASEAN region are not willing to give or willing to accept, okay, or willing to change in this in their particular in their domestic policies. ठीक है, आगे देखिए. That may help a more balanced trade regime and facilitate new cross investment in resilient supply chains. ठीक, आगे देखिए. That cohesive and responsive ASEAN that PM spoke about must also cover trade and investment issues. ठीक है. In pursuit of free, open and inclusive rule-based Indo-Pacific region, India looked for alignment between 2019 ASEAN Outlook on the Indo-Pacific and the Indo-Pacific Ocean initiatives, which the PM announced at the same summit last year. So we have seen that Indo-Pacific Ocean initiative that was announced in the year 2019 by Prime Minister Modi in this particular summit, okay, last year in इंडिया आसियान समिट. और सागर इनिशिएटिव ऑलरेडी आप जानते हैं. तो इन सब का क्या है एम्फेसिस है? फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन. सारा का सारा एम्फेसिस यहाँ पास क्या है? दिस इज एक्चुअली द एम्फेसिस इज ओवर फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन. ठीक है. द इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव इज बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14, that is SDG 14. Important point for your mains answer. And proposes a safe, secure and stable maritime domain. India also brought up the fight against terrorism. ठीक है. तो जब भी कभी आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट को आप एसडीजी से
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से अगर रिलेट करके दिखा सकें, दैट रियली एड्स वैल्यू इन योर आंसर. सो दैट इज व्हाई I will suggest you to take note of this particular point. Okay. India addressed the challenge in South China Sea directly and asking for a rule-based order in the region, upholding adherence to international law, especially the United Nations Convention on Law of the Sea. ठीक है? Despite assertions by many that South China Sea must be governed by UNCLOS and freedom of third parties to operate, it is evident that the draft code of conduct which China is negotiating with ASEAN excludes these vital elements and seeks ASEAN concurrence to make China the hegemon of South China Sea as it has basically become. ठीक है, इन दो पॉइंट को समझिए. इंडिया already addressed the challenges in the South China Sea directly and asking for a rule-based order in the region, upholding adherence to international law, especially UNCLOS. आप जानते हैं कि Chinese have been flouting, okay, rules, international rules and norms, and also even the ruling of United Nations Convention on Law of the Sea. इस कॉन्टेक्स्ट में अनक्लोज के भी नॉर्म्स एंड प्रोविजंस को उन्होंने चाइनीज ने वोलेट किया है और डिसोबे किया है. बट इंडियंस हैव बीन और इंडिया हैज बीन इंसिस्टिंग ऑन adhering to the international law, especially UNCLOS. ठीक है? And India has also stood firm with all the countries in this particular region, okay, to secure to ensure safety and security of sea lanes of communication and to ensure that South China Sea does not become the backyard of China and to help in prevailing this perception that South China Sea is an international body. क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया उन दूसरी कंट्रीज जिनके साथ ही मिल के ऐसा करने के लिए ट्राई कर रहा है वो उन कंट्रीज के लिए नहीं. इंडियन गुड्स भी साउथ चाइना सी को क्रॉस करते हैं और साउथ चाइना सी अगर इंटरनेशनल बॉडी नहीं बन रह पाती चाइना की वजह से तो उससे इंडियन गुड्स को भी नुकसान है. ओके, मतलब इंडियन कंसाइनमेंट जो क्रॉस करता है साउथ चाइना सी को वो भी नहीं कर पाएगा. तो इंडिया का डायरेक्ट स्टेक भी है साउथ चाइना सी में. इट इज नॉट जस्ट दैट it is echoing the concerns of the countries present in that particular region. No, India has direct interest in ensuring the safety, security, and independence of those sea lanes of communication that exist in South China Sea, because Indian consignment also crosses that particular region. फिर एक चीज ये दूसरा, despite assertions by many that South China Sea must be governed by UNCLOS, ये बहुत लोगों के असर्शंस रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पर सब जानते हैं फिलीपींस, वियतनाम, ओके, जापान, many other countries, even Malaysia, all these countries have been insisting or asserting that South China Sea must be governed by UNCLOS and freedom of third parties to operate. और थर्ड पार्टी को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए वहाँ पास. It is evident that the draft code of conduct which China is negotiating with ASEAN, okay, draft code of conduct that China is negotiating with ASEAN excludes these vital elements. Which vital elements? The vital elements that South China Sea should be governed by rule-based order and all the countries in the region should adhere to the international law, especially UNCLOS, that is United Nations Convention on Law of the Sea. This draft code of conduct that China is trying to negotiate with ASEAN goes against these particular factors. Okay. Now, if this draft code of conduct gets finalized and gets the support of ASEAN, then that will make China the hegemon of South China Sea.
that will make South China Sea the complete backyard of China. तो फिजिकली तो वहाँ पास ऑलरेडी चाइना ने बहुत ज़्यादा असर्टिव स्टैंड्स ऑलरेडी ले लिए हैं और अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग की है, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड्स। ठीक है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स वहाँ पास बनाए। फिर आप जानते हैं 9-9 के बारे में। ओके, इंक्रीजिंग क्लेम्स इन इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, मतलब आर्टिफिशियल आइलैंड्स वहाँ पास बना दिए और उसके बाद आइलैंड के किनारे किनारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को क्लेम करने लगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, वहाँ पास चाइनीज इंकर्जन तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ गए। तो it has been forcing itself physically, okay, in South China Sea since longer time now. Now, if this code of conduct that it is trying to negotiate with ASEAN, if that is finalized, then in a way that will be a tacit acceptance by ASEAN committee of China being the hegemon of South China Sea, and this goes against the interest of India. Okay, let alone those countries which are already having so many troubles, okay, in dealing with China in that particular region. As ASEAN hedged, it was Chinese PM Lee who pushed for an early conclusion of COC in an effort to bring forward 2021 timeline. Okay, ASEAN is uncomfortable with the direction that COC is taking and has used COVID-19 pandemic as the reason to avoid discussion virtually. तो ये कोड ऑफ कंडक्ट जो अगर कंक्लूड कर दिया गया, that would amount to an acceptance of Chinese hegemony in the region. That is something that ASEANs have been sidelining, okay, और डिले कर रहे हैं कि वो नेगोशिएट ना हो पाए। फिर आगे देखिए, with respect to COVID-19 pandemic, PM Modi announced a contribution of $1 million to the COVID-19 and ASEAN Response Fund. ठीक है, so this is a factual information. Hopefully this will form the basis of a larger exports of related medicines and medical equipment from India to ASEAN countries. ठीक है, so this will become the basis of larger exports of related medicines and medical equipment from India to, मतलब India is doing very good when it comes to pharmaceutical sector, so it is able to manufacture various medicines and equipments, and that is something that India will be exporting to ASEAN countries. To support physical and digital connectivity, the PM reiterated the offer of $1 billion line of credit, which has not been utilized for several years. Okay, तो $1 billion लाइन ऑफ क्रेडिट जो है, जो इंडिया ने ऑलरेडी ऑफर कर रखी है, जिसको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया है, उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिटरेट किया है उस पर्टिकुलर ऑफर के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, आगे, देयर डज नॉट अपीयर टू बी अ कोजेंट पॉलिसी परस्यूड फॉर दिस बाय इंडियन कंपनीज, nor do Asian members see this as more attractive than what is offered by the Belt Road Initiative and the Asian Infrastructure Investment Bank. लेकिन हुआ क्या कि अगर आप कंपेयर करें द काइंड ऑफ स्केल, इंटेंसिटी and the number of the projects that BRI is offering, and also the kind of funding that can accrue from institutions like Asia Infrastructure Investment Bank, that is nowhere, or this particular initiative is nowhere close to the size scale of these particular initiatives by China. ठीक है, तो अट्रैक्टिव यहाँ पास क्या है, अट्रैक्टिव एक्चुअली BRI ही है, AIIB ही है, और हालांकि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है AIIB में, स्टेक होल्डर है, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है चाइना के बाद, लेकिन तब भी चाइना के से अगर कंपेयर करें तो स्टेक्स यहाँ पास इंडिया के बहुत कम है। और BRI तो आप जानते हैं, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, दिस इज
uh, Chinese governed completely by Chinese establishment. However, the demands for connectivity are immense, and it is best if India uses the partnership with Japan and Australia to create a suitable projects like strategic port in Asia. एक्चुअली है क्या कि जब प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे थे, he came out with something called quality infrastructure partnership initiative. अगर ये चीजें जैसे क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप इनिशिएटिव, ये इस तरह की चीजें अगर प्रमोट की जाए तो दैट इज समथिंग दैट हैज रियली द पोटेंशियल ऑफ रिप्लेसिंग द charm and charisma and attraction that projects like BRI have been able to attract. But these are not being pursued. आप फिर जानते हैं जैसे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ओके, तो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप इनिशिएटिव, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, इस तरह की चीजें अगर आसियान में की जाती हैं इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया द्वारा, then we will be able to reduce the chasm, the attraction that BRI has in this particular region. लेकिन अगर इस तरह के स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं तो एक यूनिलैटरल सेंस में $1 billion की क्रेडिट लाइन, that is something that is not going to be more attractive than BRI or say in Asia Infrastructure Investment Bank. Definitely वो लाइमलाइट और अट्रैक्शन ज़्यादा इन्हीं को मिलने वाला है. ठीक है. आगे देखिए. It must however take into consideration the relatively slow implementation of US-Japan-Australia infrastructural trilateral initiative in the region, which reveals the difficulties in undertaking coordinated projects in third countries. अब है क्या कि यही पास दिक्कत ये आ जाती है कि फॉर एग्जांपल जब आप BRI इनिशिएटिव को देखेंगे तो चाइना हैज बीन वेरी एग्रेसिव इन परसुइंग द completion of the projects in BRIs, and that kind of urgency is not witnessed in other cases. For example, here in case of US Japan Australia Infrastructural Trilateral Initiative, अगर BRI के जैसे ही एक्सटेंसिवली और अर्जेंट बेसिस में प्रोजेक्ट कंप्लीशन अगर होते हैं तो जो उसके अल्टरनेटिव्स हैं डेफिनेटली वो भी उतने अट्रैक्टिव बन पाएंगे, लेकिन यहाँ पास ये चीज़ें नहीं हो पाती, और उस केस में क्या होता है कि BRI जैसे इनिशिएटिव ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं. Okay, while India stays the course and supports ASEAN's centrality, its patience wearing thin due to lack of appropriate ASEAN responsibility for its own reason. अब ASEAN अगर करता क्या है कि अगर this code of conduct that is in the offing, if it gets finalized and ASEAN countries are willing to keep their stakes in initiatives like BRI, okay, then that would amount to be an acceptance of Chinese dominance over these countries in this particular region. तो आसियान अगर अपनी खुद की डिफिकल्टीज के लिए उतना ज़्यादा कॉशियस नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, जितना इस पर्टिकुलर पॉइंट का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, इंडिया चाहे जितना उसको इम्पोर्टेंस अपनी तरफ से दिलवाए. ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को. मतलब आसियान को खुद भी यहाँ पास रियलाइज करना होगा कि although there may be certain economic cost which they can incur if they oppose these initiatives of BRI and similar other initiatives, but the long-term interest that they will be actually making conditional in this particular instance, if they start dealing with China in such close proximity, then they will be putting a lot of interest in the stakes. Okay, they will endanger various things which might affect them negatively in the very near future. आगे देखिए.
ASEAN is struggling to deal with China as well as growing interest in the Indo-Pacific. The Quad is seen as a challenge to ASEAN's sentiments as it forces ASEAN to consider dealing with Chinese intrusions more robustly. अब आसियान यहाँ पास दिक्कत क्या कर रहा है कि आसियान को BRI इनिशिएटिव, फिफ्थ एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, all this look very interesting. But there is another side, that is political side, whereby various countries in ASEAN grouping are having various problems with China. Okay, so here in this particular instance, they will need to choose between political cost and the economic cost. Okay, so if they go with economic integration, more and more economic integration with China, then there can be a political cost, okay, which they will require to pay. But the kind of pressure that they have been facing has also come from groupings like Quad, where they are required, or where groupings like Quad is challenging Asian sentiments as it forces them to consider dealing with China's intrusions more robustly, means more assertively. मतलब क्वाड जैसी ग्रुपिंग क्या करती हैं, आसियान को मजबूर करती हैं कि वो चाइनीज इंट्रूजन्स को लेके ज़्यादा असर्टिव हो चाइना के अगेंस्ट। और एक कॉन्टेक्स्ट में क्या है, वो चाइना जैसी कंट्रीज का, ये स्पेशली चाइना के साथ कोलैबोरेशन के लिए राजी हैं। क्यों? BRI इनिशिएटिव है जो बहुत अट्रैक्टिव है, AIIB प्लेटफॉर्म है जो फंडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा देगा। ओके, मतलब यहाँ पास है कि ASEAN will be required to weigh the political cost and the economic cost of engaging with China. ओके, तो आसियान को अपनी प्रॉब्लम्स को लेके और ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा। मतलब जो कैरिज्मा है, जो अट्रैक्शन है BRI में, AIIB में, उसकी लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कॉस्ट भी है, वो आसियान कंट्रीज को रियलाइज करना होगा। ओके, मतलब जो बैड इफेक्ट्स हैं चेक डिप्लोमेसी के, चेक बुक डिप्लोमेसी के, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के, चाइनीज के साइड से, वो आसियान को उन चीज़ों के लिए और ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा। और क्वाड जैसी ग्रुपिंग क्या कर रही है, क्वाड स्पेशली क्वाड प्लेटफॉर्म आसियान को प्रेशराइज कर रहा है कि वो चाइना के साथ अपनी डीलिंग के लिए और ज़्यादा असर्टिव हो, चाइनीज इंट्रूजन्स के खिलाफ और ज़्यादा असर्टिव हो। ठीक है, देर इज नो डाउट दैट एज अ ग्रुप आसियान इज अनएबल टू कोप विद चाइना। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आसियान एक ग्रुप के फॉर्म में चाइना के अगेंस्ट कोप नहीं कर पा रहा है। इट्स मेंबर्स हैव बीन डूइंग व्हाट दे कैन। ठीक है, तो जो एफर्ट्स देखे जा रहे हैं कंट्रीज के द्वारा चाइना के अगेंस्ट, दे आर एट इंडिविजुअल लेवल एंड नॉट एट द लेवल ऑफ ग्रुप। इंडिया इज एंगेजिंग विद सम ऑफ देम फॉर आसियान प्लस पॉलिसीज। ओके, आसियान प्लस मतलब आसियान के 10 मेंबर हैं प्लस कुछ और कंट्रीज। गिवन इंटरनल इश्यूज अमंग आसियान मेंबर्स, calls for restricting the influence of Laos, Cambodia in ASEAN decision making are emerging in non-official channels as they are seen as Chinese allies. तो एक्चुअली है क्या कि कुछ कंट्री जैसे फिलीपींस हैं, मलेशिया है, ये इनका चाइना के अगेंस्ट आपने स्टेप्स देखे होंगे। लेकिन कुछ कंट्रीज जैसे लाओस और कंबोडिया है, ये आसियान ग्रुप के अंदर चाइना के एलीज माने जाते हैं। तो यही कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से आसियान एज अ ग्रुप चाइना के अगेंस्ट असर्टिव नहीं हो पाता। तो जो कुछ भी एफर्ट्स आप इन कंट्रीज को जो द्वारा देखते हैं चाइना के असर्टिवनेस के अगेंस्ट, वो इंडिविजुअल लेवल में है। दैट इज व्हाई इट इज बीइंग सेड दैट एज अ ग्रुप इट इज नॉट एबल टू कोप विथ चाइना। समझे आप? यहाँ कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
I'm waiting for your question. So if you have any question, you can ask me here. Okay. Okay, let us move forward then. The idea of ASEAN minus X nomenclature used in some economic decision making could emerge in ASEAN's overall system if the founding countries and Vietnam play a better hand. ठीक है, तो होगा क्या कि आसियान प्लस मेंबर्स, तो आप समझ गए कि 10 प्लस आसियान के जो 10 है और प्लस कुछ और मेंबर्स। आगे क्या है, आसियान माइनस एक्स मतलब आसियान माइनस दोज कंट्रीज विच आर कंसिडर्ड एलीज ऑफ चाइना। ठीक है, तो यहाँ पास एक्चुअली आसियान माइनस एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पास लाओस कंबोडिया और ऐसी कंट्रीज से हैं जो चाइना के की एली समझी जाती हैं। वो नॉमेनक्लेचर कुछ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में ऑलरेडी कुछ राइटिंग्स में देखा गया है, लेकिन ये आसियान के पूरे ओवरऑल सिस्टम में इमर्ज हो सकता है अगर फाउंडिंग मेंबर्स और वियतनाम वियतनाम जो है ये फोकस करें और इसमें अच्छा मतलब इसके लिए ट्राई करें। तो समझ रहे हैं, तो यह फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे, आप लिखिए यहाँ पास फाउंडिंग मेंबर्स, फाउंडिंग कंट्रीज कौन थी, फाउंडिंग कंट्रीज थी 5 फाउंडिंग कंट्रीज। अब 5 फाउंडिंग कंट्रीज में कौन है, पहला है मलेशिया, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है फिलीपींस, चौथा है थाईलैंड और पांचवा है सिंगापुर। इफ ऑल दीज कंट्रीज along with Vietnam try, okay, along with Vietnam try for ASEAN minus X, X का यहाँ पास मतलब है चाइनीज एलीज से, then that particular thing can emerge as overall ASEAN system। मतलब फिर क्या होगा, समझिए इस बात को कि अगर ये ट्राई किया गया, देखिए इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, फिर से एक बात को बड़े सिंपल तरीके से समझिए कि कॉन्टेक्स्ट यहाँ ये है कि आसियान एज अ ग्रुप इज नॉट एबल टू कोप विथ चाइना। व्हाई, बिकॉज various countries in ASEAN group are actually the allies of China। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट नाम जो है वो है लाओस एंड कंबोडिया। So whatever steps that you have seen by countries that they have taken in order to oppose Chinese incursions, okay, Chinese intrusions and Chinese aggressive foreign policy, all those steps have been taken by countries at individual level। ठीक है, getting it, but what happens that those efforts are not fruitful because they are being taken by the countries at individual capacity। If somehow ASEAN minus X kind of uh, nomenclature, which has already been witnessed in some of the economic writings or some of the writings related to economic decision making, if that could emerge in overall ASEAN system, then that particular ASEAN group or ASEAN as a group will be able to cope with China, because then ASEAN as a whole group will be able to counter Chinese intrusions and Chinese increasing assertiveness। समझ गए इस बात को, और उनमें से जो कंट्रीज हैं जो वाकई काम कर सकती हैं वो है वियतनाम और फाउंडिंग कंट्रीज। फाउंडिंग कंट्रीज में कौन कौन आता है, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड सिंगापुर। अलॉन्ग विथ वियतनाम, ये 6 कंट्रीज अगर चाहें तो मिलके
एक ऐसा अरेंजमेंट डेवलप कर सकती हैं आसियान में कि आसियान एज ओवरऑल सिस्टम विल बी एबल टू cope with China or will be able to oppose Chinese aggressiveness. Okay, समझे आप इसको? चलिए ठीक है, देखिए आगे देखते हैं. Due to COVID-19, countries are redefining their sense of national security. Take the focus on strategic autonomy with an emphasis on resilient supply chains could be a robust movement. ठीक है, तो फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी. स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी का मतलब होता है ठीक है, विथ एन एम्फेसिस ऑन, मतलब स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी का मतलब होता है कि फ्रीली आप अपने फॉरेन पॉलिसी को शेप कर पाए. ठीक है, विथ एन एम्फेसिस ऑन रेजिलियंट सप्लाई चेन कुड बी अ रोबस्ट मूवमेंट. मतलब कोविड-19 के टाइम में फोकस क्या रहेगा? फोकस रहेगा किसमें? स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी में, दैट इज इंडिपेंडेंस इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में, और रेजिलियंट सप्लाई चेन के बिल्डअप में. India has steadfastly grown its bilateral engagement with select ASEAN members like Indonesia, Vietnam, and more recently Philippines. तो बायलैटरल लेवल में बायलैटरल एंगेजमेंट की बात करें तो कुछ सेलेक्ट आसियान मेंबर से इंडिया ने अपने रिश्ते और ज़्यादा डीप किए हैं. उसमें इंडोनेशिया शामिल है, वियतनाम है और फिलीपींस है. Cooperation against terrorism and in defense has been initiated more robustly. Okay, and that was something which was visible in India's Act East policy also. As Asia looks for multipolarity, developing relations with individual ASEAN members with matching security concerns is bound to acquire importance for India. Asia क्या है? Asian important Asian countries are promoting multipolarity. ठीक है, in the region, in context of increasing Chinese uh, incursions, okay, and assertiveness. समझ रहे हैं? तो developing relations with individual ASEAN members with matching security concern is bound to acquire importance for India. तो क्या चीज यहाँ पास important हो जाएगी? जहाँ पास मल्टीपोलैरिटी के लिए ट्राई किया जा रहा है कंट्रीज के द्वारा, उस केस में इंडिया का बायलैटरल रिलेशंस आसियान कंट्रीज के साथ, उसको वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा. समझ रहे हैं आप? सो दिस इज समथिंग व्हिच द स्कॉलर इज एक्चुअली ट्राइंग टू establish. Okay, so if you have any question you can ask me. Okay, next is India's pivot to Australia. अब हम एनालाइज करेंगे. हमने एनालाइज इस पर्टिकुलर केस में क्या किया है? इंडिया आसियान, फिर उसके पहले हमने देखा इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया trilateral that is emerging, and now we are going to analyze India Australia bilateral relationship. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ जैसा कि हमने देखा, वी आर ऑलरेडी कोऑपरेटिंग इन प्लेटफॉर्म्स ऑफ क्वाड. Then we also have
लॉजिस्टिकल सपोर्ट मैकेनिज्म, ठीक है, which was concluded in the year 2020. Then ट्रेड रिलेशंस तो ऑलरेडी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पास एक्चुअली स्ट्रेटेजिक एरिया में फोकस होगा। एक चीज और ध्यान रखें, अगेन दिस पिवट टू ऑस्ट्रेलिया should be seen in context of again this very rising assertiveness of China in the region, ठीक है। तो यहाँ भी कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली वही है, चाइना का राइजिंग असर्टिवनेस, और उसी कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली हमें यहाँ पास देखना है इस चीज को। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो द एनालिसिस इज बाय हर्ष बी पंत, और यहाँ पास आपको बहुत सारी चीजें फिर से मिलेंगी जिनको आप एग्जाम में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स लिखने में, ठीक है। विल ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन मलाबार एक्सरसाइजेस, ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। For weeks, Indian media has reported with near certitude that New Delhi will be inviting Canberra to join its high-level naval exercises, which usually involve the navies of India, Japan, and United States. अब आप जानते हैं कि this is something which is a reality now, okay? And we have already seen this particular event taking place in this particular area. While strategic dialogue and formal cooperation has long existed between both countries, that is quadrilateral security dialogue, the exercise would mark the first time Australia would be part of this official joint military engagement. Actually 2007 में जब हमने क्वाड के कॉन्टेक्स्ट में ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया था मालाबार एक्सरसाइज में, तो वहां पास ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया था। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया वाज विलिंग टू come to join exercise, but when this was opposed by China, तो चाइना की अपोज करने से ऑस्ट्रेलिया बोला कि नहीं भाई हम नहीं कर रहे। Finally we actually succeeded in bringing Australia in this particular grouping and also in the exercise. For India, the decision to extend the invitation, a move it had so far held back, despite interest from Australia, marks a major step. Not only does New Delhi hope to strengthen its relations with its partners in Indo-Pacific, but it intends to send a strong message to Beijing as border tensions mount. India's military partnerships are growing stronger than ever, and Chinese intransigence will make them even more potent. इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है गलवान वैली में चाइनीज के साथ स्कर्मिशेस के कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो इंडिया की मिलिट्री पार्टनरशिप इसी वजह से स्ट्रॉन्ग भी हो रही है, और चाइनीज इंट्रांसिजेंस जो है, चाइना की जो जिद है अपने एक्सपेंशनिज्म को बढ़ाए रखने की, और कल मैंने आपको बताई थी एक चीज, समथिंग कॉल्ड सैलामी स्लाइसिंग, मतलब स्लाइसेस की तरह इंडिया की टेरिटरी को अपनी तरफ लेने की, वो जो है फैक्टर बनेगा कि इंडिया अपनी मिलिट्री पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करता जाए, ठीक है। आगे देखते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस हैव इवॉल्व्ड रैपिडली ओवर द पास्ट 5 years, and in this development is a natural corollary. Which development? India's pivot to Australia. When Indian Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Scott Morrison held their first virtual bilateral meeting in June, the pair offered a number of significant agreements. ठीक है, ये जून 2020 की बात कर रहे हैं। This the signed accord included mutual logistics sharing agreement. मैंने आपको इसके बारे में बताया है ऑलरेडी। Mutual logistics sharing agreement. This is similar to logistical exchange memorandum of agreement that we have with USA, which makes India and USA the logistical ally, ठीक है।
आगे देखिए, the mutual logistics sharing agreement, allowing the two nations to use each other's military bases for logistic supports, improving military partnership and interoperability. तो यहाँ पास मिलिट्री पार्टनरशिप इंप्रूव होगी और दोनों कंट्रीज की मिलिट्री की इंटरऑपरेबिलिटी भी इंप्रूव होगी. ओके, आगे देखिए. The two countries also agreed to elevate their ties to a comprehensive strategic partnership. तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2009 में हमने साइन की थी इसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ. ओके, आज 11 साल बाद एक्चुअली क्या हो रहा है, दैट इज बीइंग एलिवेटेड टू द लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप which is based on mutual understanding, trust, common interest, and the shared values of democracy and rule of law. This was actually in the statement released in the meeting. ये लिख लिया करें आप, ये चीज़ें ही आपको आंसर्स बनाने में मदद करती हैं. So the two countries also agreed to elevate their ties to a comprehensive strategic partnership which is based on mutual understanding, trust, common interest, and the shared values of democracy and rule of law. आगे देखिए. This is symbolic of their commitment to strengthen their engagement in Indo-Pacific for promotion of open, free, rule-based Indo-Pacific region. Okay, supported by inclusive global regional institutions. As the two countries put in joint statement. तो यही joint statement में जो ये wordings use की जाती हैं, this help you in framing good answers, especially the introduction and conclusion part. ठीक है, तो यहाँ बस जॉइंट स्टेटमेंट किसमें स्ट्रेस कर रहा है, जॉइंट स्टेटमेंट स्ट्रेस कर रहा है ओपन फ्री रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन विच इज सपोर्टेड बाय इंक्लूसिव ग्लोबल एंड रीजनल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, द टाइमिंग ऑफ सच अकॉर्ड्स couldn't be better for two nations that have been at the receiving end of China's aggressive actions. तो जून में जब ये मीटिंग में जॉइंट स्टेटमेंट निकला था, so that was also the time when Indian and Chinese forces were locking their horns in Galwan Valley region. ठीक है, tensions between Australia and China have been high since Canberra in April called for an investigation into the origins of COVID-19. Okay, so you know that the origins of COVID-19 goes to the wet market of China. और उसमें अगर कैनबरा जो है इन्वेस्टिगेशन खोलेगा तो मतलब क्या है, दैट इज अ काइंड ऑफ सैंक्शन दैट that particular step would be sanctioning China. Yes or no? That would amount to be a sanction against China. तो इससे चाइना को दिक्कत होगी. लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी कह रहा है कि भाई हद है. ओके, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इमेज जो बनाई है वो एक ट्रेडिंग स्टेट की बनाई है. आप समझिए, इसके पास ट्रेडिंग स्टेट. तो जापान भी एक अपनी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम जिस जापान को इमर्ज होते देखते हैं, दैट इज अ ट्रेडिंग स्टेट. तो जापानीज स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, अगेन टू कुछ एक्सटेंड ब्राजील, है ना, साउथ अफ्रीका, ये सब ट्रेडिंग स्टेट्स के फॉर्म में इमर्ज हुए. ठीक है, तो इसमें ये कंट्रीज क्या होती है, ट्रेडिंग स्टेट्स अवॉइड कन्फ्लिक्ट विद कंट्रीज. तो कई बार आप देखेंगे बहुत पैसिफिस्ट एटीट्यूड भी देखने को मिलता है. जापान के केस में तो बहुत क्लियर था, मतलब जापान की जो डिफेंस पॉलिसी है उसमें वो चीज़ बड़ी क्लियर दिखती है. सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया बीइंग अ ट्रेडिंग स्टेट आल्सो अवॉइड्स avoidable conflicts with countries like China. लेकिन चाइना हैज Chinese foreign policy knows no bounds, no limitations of assertiveness. Okay, तो अब फाइनली ऑस्ट्रेलिया ने रियलाइज किया कि भाई ये तो हद है. हम सिर्फ ओरिजिन के लिए यहाँ पास कुछ कमेटी बैठा रहे हैं, ओके, इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं और उसमें भी चाइनीज को दिक्कत आ जा रही, तो उसमें वो पीछे नहीं हटे. ठीक. China responded by reportedly drawing up a list of Australian exports that could be subject to tariffs and stricter controls. ये typical Chinese policy है.
कि थोड़ा सी भी कहीं से भी टेंशन हो तो चलो इसकी लिस्ट निकालो, टैरिफ्स कहाँ कहाँ इम्पोज किए जा सकते हैं, ओके, टू हर्ट द इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्री. India, for its part, has been facing a tense standoff with China after border clashes last month resulted in the death of 20 Indian border troops and an unknown number of Chinese side. Okay, so when the analysis was actually wrote by Ashish Pant, it has been only month of the death of 20 Indian border troops. Although the two sides are now in the process of disengaging after diplomatic and military talks, tensions over the long undemarcated border, the line of actual control, marks perhaps the worst Sino-Indian crisis since 1960s. So this is now because the last bullet before this Galwan Valley and the small skirmish that we had uh, in Doklam 3 years ago, but that Doklam plateau was not in Indian land, but this particular skirmish is happening on Indian land. तो आप देखें कि अगर उसको हटा दें, डोकलाम वाले को हटा दें, तो the last bullet that was fired along this border was in 1980s. So India-China border since last 3-4 decades have been reasonably peaceful. ओके, तो एलओसी का केस अलग था. एलओसी में हमेशा इन्फिल्ट्रेशन, ओके, और सीज फायर वायलेशंस होते रहते थे. लेकिन एलएसी जैसा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हम उसके साथ शेयर करते हैं चाइना के साथ, वो पीसफुल एरिया था. ओके, उसमें दिक्कतें नहीं थी. लेकिन यहाँ पास इस जगह दिक्कत हुई इस साल. So, although two sides are now in the process of disengaging after diplomatic and military talks, tensions over the long undemarcated border, the line of actual control, marks perhaps the worst Sino-Indian crisis. Okay, so the problem is this, that the border is still undemarcated. Okay, undemarcated and undelineated. The border boundary line में actually वहाँ पास consensus नहीं. Amid this rising assertiveness by China, Canberra stands to gain a partnership it has long desired. And what is that? India and such other countries that could come with Australia. Okay, so that Chinese assertiveness could be contained. For years, Australia wanted to be party to the exercises, even agreeing to join it as an observer in 2017. But India, trying to tread cautiously vis-a-vis China, had not been enthusiastic. पहले 2007 में इंडिया ने बुलाया, फिर ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया. ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली ज्वाइन किया, लेकिन चाइना के अपोज करने से मना कर दिया. फिर बाद में इंडिया itself has been unwilling to include Australia in this particular exercise because India itself was trying not to irrite China or not to make China angry about this particular issue. Because Chinese foreign policy establishment always thought that if Australia also joins this particular group, that will be a conclusive chapter to the formation of strategic alliance, that is Quad. तो चाइना बिल्कुल पहले से ये मान रहा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया भी ज्वाइन करता है तो ये एक लास्ट चैप्टर जुड़ जाएगा यहाँ पास कि ये स्ट्रेटेजिक अलायंस चाइना के खिलाफ तैयार हो गए. इसी वजह से इंडिया भी विलिंग नहीं था बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया को लाने के लिए. ओके, उसके बाद तो चाइनीज स्टैंड इसमें इस तरह से इतना क्लियर आने लगा. ठीक है, आगे देखिए. आप चाहें तो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं. यू आर फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन. Okay, let us see further.
But India trying to trade cautiously with China had not been enthusiastic. Now its calculations have changed. Okay, and why? Because China is an imminent threat for India. Okay, and secondly, if India tries to assuage China by not taking this kind of a step, that is not going to deter, or that is not going to convince China not to attack India or not to disturb India, not to antagonize India in this particular. मतलब कि अगर इंडिया कोई ऐसा स्टेप लेता है जो ये समझ के वो कोई अपनी फॉरेन पॉलिसी चूज करता है कि चाइना को इससे दिक्कत होगी, उससे चाइना उसको कंसीडर नहीं करता उस ऐसे पर्टिकुलर स्टेप को। चाइना को जो करना होता है वो करता ही है। तो अगर यही बात है तो इंडिया ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, अब हम ऑस्ट्रेलिया को भी लाएंगे यहाँ पास। ओके, हम ताइवान से भी अपना कॉपरेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम वियतनाम से भी अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को बढ़ाएंगे, सिंगापुर से भी बढ़ाएंगे, मलेशिया, फिलीपींस, सबसे करेंगे। तो मलेशिया से एक्चुअली रिसेंटली दिक्कत थी, लेकिन हम उससे भी कॉपरेशन, इंगेजमेंट ये सब बढ़ा ही रहे थे। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, आप कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली दिक्कत आई थी, आप जानते होंगे। Tries to join hands and develop a strong stance against China with like-minded countries no longer seems radical. Okay, so because of the situation that have been emerging between India and China, whereby China is hell bent to take away or by slicing Indian territory, okay, a bit more in along the eastern, western, and central region in the border. The circumstances are such that now India does not think any such step is going to be very radical. This seems to be obvious foreign policy stance for India. Okay, and rightly so. For Australia and India, stronger defense partnership is essential to achieving free and open Indo-Pacific. ये हमने देखा भी था ट्राइलैटरल डायलॉग में और summit में भी. Faced with an increasingly powerful and aggressive China, countries such as Australia, Japan, and United States, and even members of Association of Southeast Asian Nations, that is ASEAN, are all rethinking and remapping their China policies. Okay, particularly with regard to incursions in South China Sea. ठीक है, इस चीज को समझिए। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा फिर से कि क्या एक्चुअली हो क्या है, चेंजेस क्या है यहाँ पास कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में। वहाँ सबसे बड़ा कॉन्टेक्स्ट यहाँ ये है कि चाइना इज बिकमिंग more powerful and more aggressive, and that is actually the main factor जो कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और आसियान की कई मेंबर कंट्री, जिनमें से फाउंडिंग मेंबर्स शामिल हैं। फाउंडिंग मेंबर्स मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं, और फिर कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीज जैसा कि वियतनाम, और कल हमने अपने एनालिसिस में देखा कि ऑल्सो कंट्रीज लाइक यूके, जर्मनी, फ्रांस, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज हैं, कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं, एंड वो अपनी चाइना को लेकर जो पॉलिसी है उसमें रिवीजन कर रही है। और वो रिवीजन किस डायरेक्शन में है? वो रिवीजन इस डायरेक्शन में है कि उन्होंने चाइना के द्वारा जो एग्रेसिवनेस, जो इंट्रूसिव फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की गई है चाइना के द्वारा, उससे जो थ्रेट पोज होता है किसको, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को, उसको काउंटर करने के लिए वो एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। ASEAN recently released a vision statement where it underlined the need for China to abide by international law and to finalize China-ASEAN Code of Conduct for South China Sea. इसके बारे में अभी हमने देखा, लेकिन Code of Conduct actually is problematic. We already saw it, and that is why ASEAN is delaying this particular Code of Conduct.
तो जो ड्राफ्ट कोड ऑफ कंडक्ट था जो चाइना की तरफ से रखा गया था, दैट इज प्रॉब्लमैटिक बिकॉज that will establish China as a hegemon in South China Sea. The code of conduct that ASEAN is favoring is going to include all those factors which are important from point of view of those countries which are having problem with China. Okay. इस चीज को आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। आगे देखिए, The United States this month strongly condemned China's action in South China Sea, calling its efforts completely unlawful. And this is not new. You already know building of तो ये सारी चीजें ऑलरेडी चाइना के साथ के द्वारा की जा रही है ना, और यूनाइटेड स्टेट्स ने इनको स्ट्रांगली कंडेम किया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली अनाउंस्ड 2020 डिफेंस स्ट्रेटेजिक अपडेट। ये क्या है? ये 10-year डिफेंस प्लान है और 270 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर। So this shows what? ओके, तो ये 10-year डिफेंस प्लान जो है 270 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, इसको किस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए? क्या शो करता है? शो करता है इंक्रीज ऑस्ट्रेलियन कंसर्न फॉर असर्टिव एंड मिलिटरिस्टिक चाइना। ओके, तो ये सिर्फ साउथ चाइना सी की बात नहीं है, ये बात है पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक रीजन की। ओके, और इंटेंशन क्या है यहाँ पास? इंटेंशन है कि ये मिलिट्री रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जा सके फॉर इंश्योरिंग फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एज यू नो इज अ ब्रिज बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन,
and there are significant economic and strategic interest of Australia in Indo-Pacific. समझ रहे हो इस चीज को? तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा. इसमें कोई क्वेश्चन तो आप बताएं. आगे देखिए. Defense partnership are central to any effort to counter China, and that is why it is coming out with Quad. Then एक चीज Quad हो गई, दूसरा है trilateral mechanism among India, France, Australia. Then finally bilateral efforts with India. तो बायलैटरली इंडिया के साथ है, ट्राइलैटरली इंडिया एंड फ्रांस के साथ है, और क्वाड्रिलैटरल डायलॉग में, क्वाड्रिलैटरल प्लेटफॉर्म में इंडिया, जापान और यूएसए के साथ है. ये ऑस्ट्रेलिया के कंसर्न्स दिखा रहे हैं ये प्लेटफॉर्म. बायलैटरल, ट्राइलैटरल, क्वाड्रिलैटरल. ओके, तो आप तीनों लेवल में ऑस्ट्रेलिया को एंगेज होते देखेंगे इंडिया के साथ, बायलैटरल में, ट्राइलैटरल में और क्वाड्रिलैटरल में. टोटल कंट्रीज जो हो गई वो क्या हो गई? क्वाड में 4 कंट्रीज हैं और ट्राइलैटरल में फ्रांस भी है. ओके, बायलैटरल में 2 कंट्री इंडिया है. तो मतलब टोटल 5 कंट्रीज हैं जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर यहाँ पास काम कर रहे हैं, है ना. इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2 हो गई. अदर देन दीज 2 देयर आर 3 कंट्रीज, दैट इज USA, Japan and France. Inviting Australia to Malabar exercises would significantly strengthen the military quotient of quadrilateral grouping, and that is why you know that it was invited. If Australia is given the go-ahead to join exercises, it will be first time since 2017 that all 4 Quad members participate in the joint exercise, and this was something which was declared to be Quad 2.0 by Manoj Rawat, that we have already covered in our analysis. इसको बोलते हैं Quad 2.0. ओके, क्योंकि Quad 2.1.0 किसे बोलते हैं? जो 2007 के बाद था. ओके, और इसी को ब्रह्मा चिलानी ने क्या बोला है? Sharpening of quad, sharpening edge of quad, a quad sharpening its edge. अपनी धार तेज कर रहा है quad. Okay, the quad went on hiatus from 2008 to 2017, and while has been operational since 2017, it only took off in a significant way after meeting between 2 countries' foreign ministers in September 2019. ठीक है. Prior to 2019 meeting, summits ended with each country issuing its own statement outlining its own priorities rather than a joint one. Quad members had been making very calculated statements when it came to China's actions in South China Sea, among other issues. लेकिन अभी जो है बहुत assertive वे में क्वाड सामने आ रहा है. चाइना के कंसर्न्स को अब नहीं यहाँ पास शामिल किया जा रहा है, और कोई भी ऐसा स्टेप, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो चाइना को इरिटेट कर सकता है उसे रेडिकल नहीं माना जा रहा है. Quad members had been making very calculated statements when it came to China's actions in the South China Sea, but with all 4 nations sharing an equal sense of urgency about China, priorities are now aligned, and that is why
The statements are no more calculative. मैक्रॉन जैसे फ्रांस आपको प्राइमा फेसी एक आउटसाइड पावर लगेगा, लेकिन इसने भी बहुत क्लियर स्टेटमेंट्स निकाले हैं, जो रिलीज किए हैं, जो चाइनीज इंकर्जन्स को, चाइनीज असर्टिवनेस को हाईलाइट करते हैं. Adding a military partnership element to Quad is a logical step. Okay, given the serious security challenges emanating from China's growing aggression towards four powers. Okay, तो मिलिट्री पार्टनरशिप एक्चुअली है क्या कि क्वाड का और कोई रेलेवेंस यहाँ पास नहीं है अगर इसमें स्ट्रेटजिक और मिलिट्री एंगल बहुत क्लियर वे में शामिल ना किया जाए, क्योंकि अगर ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में, इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पास फिर एक्सरसाइजेस का रेलेवेंस नहीं रह जाता ना. Why we are emphasizing on exercise and why Australia joining Malabar is a big issue, because that shows that Quad is primarily a strategic alliance or military alliance. Okay, Australia's full induction into Quad has implications for India's broader approach to Indo-Pacific as well. Okay, कैसे? Previously given Chinese reservations, New Delhi was reluctant, as I told you, to term its Indo-Pacific policy as a strategy and mostly referred to as vision for the Indo-Pacific. And the word vision was actually highlighted in the year 2015 when Prime Minister Modi released this joint statement with President Obama when he was invited as a chief guest in Republic Day. So it was actually Indo-Pacific vision document that was released in the joint statement. But now New Delhi is no more reluctant in calling its Indo-Pacific policy as a strategy and inviting Australia into the Malabar exercises for full induction. Okay, now we are not giving much heed or much importance to the Chinese reservations. Okay, and against the recent skirmishes that we developed with China, these steps are not looking anymore radical. The country was hesitant to even tie its own Indo-Pacific policy into that of Quad, arguing that its own policy was more inclusive. And why more inclusive? Because according to India, it was not against China. Was not against China or it is not isolating China. So all that was because India was not willing to make China antagonistic about its intention in India's backyard, that is Indian Ocean, and also the fluid that exists between Indian Ocean and Pacific Ocean, making this very whole region to be called as Indo-Pacific. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं. In his keynote address at the Shangri-La Dialogue in June 2018, Modi noted that geography of the Indo-Pacific stretches from the eastern coast of Africa to Oceania and stressed that India does not see the Indo-Pacific region as a strategy or as a club of limited members. तो सांग्री ला डायलॉग हुआ था, आप जानते हैं 2018 में,
अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही एड्रेस किया था उसे। तो वहाँ पास he noted that the geography of the Indo-Pacific stretches from the eastern coast of Africa to Oceania, and stressed that India does not see the Indo-Pacific region as a strategy or as a club of limited members. Means he was in a way opening the membership to China. Okay, तो समझ रहे हैं कि एक जो कहना चाहिए एसवीज करने वाली पॉलिसी, या कहना चाहिए कि मतलब a kind of sycophancy I would say is also visible. Okay, we are we were not willing to do anything or to do anything which could possibly disturb China, or which could possibly make it problematic for us uh, with respect to China in the region. Okay, with respect to Chinese ambitions in the region. तो चाइना को लेके चाइना को हम एंटेगोनाइज नहीं करना चाहते थे, मतलब सिंपल ये। लेकिन अभी क्या हुआ, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। ओके, तो ये जो चाइना को एस्वेज करने वाली बात है, चाइना को हैप्पी कोजी रखने वाली बात है, वो चीज जो है उसने कुछ रिजल्ट्स नहीं दिए, इसलिए आप ये पॉलिसी में चेंज देख रहे हैं यहाँ पास। बट एज द क्वाड स्टार्ट्स टू लेवरेज इट्स हार्ड पावर and as India's relations with China deteriorate, New Delhi is likely to reshape its Indo-Pacific strategy alongside its partners. Okay, so but as the Quad starts to leverage its hard power, that is coming out in a full-fledged manner as an alliance. Okay, strategic alliance, and as India's relations with China deteriorate, New Delhi is likely to reshape its Indo-Pacific strategy alongside its partner, and this way, this time, India is not going to see Indo-Pacific as a strategy or as a club of unlimited members. India is definitely going to see it or make it, or will try to make it a club of limited members of like-minded countries, जैसा कि क्वाड के केस में कहा जाता है, like-minded countries which also share the values of democracy. Inviting Australia for the Malabar exercise is a natural first step. Okay, given China's growing presence in the Indian Ocean, widely considering India's primary theater of interest. Okay, Indian Ocean को क्या है? For example, why it is being said that India's primary theater of interest? Because traditionally, it is India which has enjoyed dominance in this particular region. Okay, you should recall that this is the only ocean which is named after a country. So according to India, or India intends to continue this dominance and treat it as its backyard, and we cannot allow this country, this particular region, to be ceded to Chinese. But Chinese increasing presence has been making us troublesome, worrisome. So that has been troublesome and worrisome. Okay. So for example, Chinese increasing interactions with Sri Lankan. Okay, Sri Lanka, then other countries, for example, even Mauritius and all. That is something which has been worrisome for India. One more thing, India cannot relinquish its dominance. India cannot allow its dominance to recede or to dissipate in this particular region, because that will be a strategic loss for India, from which India will not be able to recover. Okay, इस चीज को ध्यान रखिए। देखते हैं, given China's growing presence in Indian Ocean, widely considered India's primary theater of interest, there has long been a sense in New Delhi that it ought to increase its presence and influence in the Western Pacific. So Western Pacific कौन सा एरिया है? Western Pacific is the eastern side of Japan.
ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कि दिस इज चाइना, दिस इज जापान, दिस इज द पैसिफिक ओशन, दिस इज कनाडा, दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स, दिस इज पैसिफिक ओशन. So this is Western Pacific. Okay, India is here. India is here. This is Pacific Ocean. This is Western Pacific Ocean. Okay, along the eastern side of Japan. China's growing encroachment in South China Sea and East China Sea. Yeah, an attempt to intimidate smaller neighbors has made it imperative for states such as India to be more hands-on in maritime disputes. Okay, क्यों? क्योंकि चाइना लगातार क्या कर रहा है, साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में इंक्रोच कर रहा है. और ये किस तरह का अटेम्प्ट है? ये स्मॉलर नेबर्स के जैसे फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ओके, सिंगापुर, तो इन सारे स्मॉलर नेबर्स को इंटिमिडेट होते हैं इस पर्टिकुलर स्टेप से. तो इसने क्या है, इट ऑल दैट हैज मेड इट इम्पेरेटिव फॉर इंडिया टू बी मोर हैंड्स ऑन मैरीटाइम डिस्प्यूट. मतलब कि अपने आप को इस मैरीटाइम डिस्प्यूट्स में शामिल करें, ओके, इंसर्ट करें अपने आप को. ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को? आपको इस कॉन्टेक्स्ट में कोई क्वेश्चन हो तो पूछे. ओके, इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछें. चलिए आगे चलते हैं. Besides the security connotations, the Quad remains critical as India seeks to build alternative supply chains, collaborate on COVID-19 treatments, and reduce its economic dependence on China, something which has been gathering pace over the past few months. Okay, तो क्वाड का एक स्ट्रैटेजिक जो एंगल है और जो मेनली जो स्ट्रैटेजिक एंगल है, उसके बाद जो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह से वो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है ये पर्टिकुलर चीज़, जिसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि क्वाड इज ऑल्सो गोइंग टू बी क्रिटिकल इन बिल्डिंग अल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स. ठीक है, कोलैबोरेट ऑन कोविड-19 ट्रीटमेंट्स और इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन चाइना जो है वो भी क्या होगी, वो रिड्यूस करने के लिए. मतलब क्वाड इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट इन दिस फैक्टर, इन दिस पर्टिकुलर एरिया ऑल्सो. अच्छा, ये ड्रीम आईएएस का क्वेश्चन है कि सर शुड इंडिया अगेंस्ट चाइना इन साउथ चाइना सी. अच्छा, मतलब आप पूछना चाह रहे हैं कि शुड इंडिया बी अगेंस्ट चाइना इन साउथ चाइना सी. डेफिनेटली इंडिया शुड बी अगेंस्ट चाइना इन साउथ चाइना सी. क्यों? ड्रीम आईएएस कोई ऐसा नाम चूज किया करें जिसको मैं यूज कर सकूं. ओके, तो ड्रीम आईएएस का क्वेश्चन है कि क्या इंडिया को साउथ चाइना सी के अगेंस्ट होना चाहिए, चाइना के अगेंस्ट होना चाहिए साउथ चाइना सी. डेफिनेटली, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि साउथ चाइना सी में चाइना क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट कर रहा है. उससे क्या होता है, जिस तरह से एक जो नेचुरल आइलैंड्स होते हैं, अगर कोई कंट्री उसमें कंट्रोल रखती है तो उससे रिलेटेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में भी उसका कंट्रोल होता है. लेकिन आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट करने के बाद चाइना उसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स क्लेम करने लग जाता है. और ये चीज बिल्कुल गलत है, ये अनजस्टिफाइड है.
साउथ चाइना सी एक इंटरनेशनल वाटर बॉडी है, वहां से इंडिया के भी कंसाइनमेंट जो है क्रॉस करता है गुड्स का। अगर वहां चाइनीज डोमिनेंस बन जाता है तो इंडिया के डायरेक्ट इंटरेस्ट भी उससे अफेक्ट होते हैं। इन वजहों से आपको ये ध्यान रखना है कि साउथ चाइना सी में इंक्रीजिंग चाइनीज aggressive postures or aggressive foreign policy is definitely against India's interest. Okay, इंडिया को बिल्कुल उसे अपोज करना चाहिए। कोई और डाउट है आपका इस कॉन्टेक्स्ट में? कोई और क्वेश्चन है? अगर है तो पूछिए। Okay, none of these developments will make China happy, and they risk making the countries involved the targets of its vengeance. उस है क्या कि डिसाइड सिक्योरिटी कॉन्टेशंस जैसा कि क्वाड का है, ये क्रिटिकल है किसके लिए? अल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स के बिल्डअप के लिए, कोविड-19 ट्रीटमेंट के ट्रीटमेंट्स को में कोलैबोरेट करने के लिए, चाइना के ऊपर इकोनॉमिक जो डिपेंडेंस है उसको कम करने के लिए। और ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि इंडिया हैज बीन मेकिंग एफर्ट फॉर दिस काइंड ऑफ चेंज, और इनमें से कोई भी डेवलपमेंट जो है वो चाइना को जो है हैप्पी नहीं करेंगे। ठीक है, तो all this will actually be problematic to China. ठीक है, Beijing has been against this informal grouping since 2007. शुरुआत से इसके खिलाफ थे बीजिंग, और वही एक कारण था कि ऑस्ट्रेलिया मालाबार एक्सरसाइज में फिर शामिल नहीं हुआ था। ओके, आगे देखिए। But given China's aggressive actions, it is unlikely that its opinion will be serious consideration for regional policymaker, and this is something which is important. जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हो जाएगी वो ये है कि जिन पर्टिकुलर स्टेप्स की वजह से, ये जिन पर्टिकुलर पॉइंट्स की वजह से इंडिया खुद भी नहीं चाहता था कि वो चाइना को डिस्टर्ब करे। जैसा कि शुरुआत में से 2007 में ऑस्ट्रेलिया को मालाबार एक्सरसाइज के लिए खुद ही इनवाइट किया था, लेकिन चाइनीज के अपोजिशन के बाद ऑस्ट्रेलिया लौट गया, ऑस्ट्रेलिया नहीं पार्टिसिपेट किया। लेकिन बाद में इंडिया ने खुद भी इनवाइट नहीं किया, मतलब खुद भी इनवाइट नहीं किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया कुछ पॉइंट्स में विलिंग था। ओके, लेकिन इंडिया की तरफ से फुली केयरफुल रहने के बाद भी, इंडिया की तरफ से फुली केयरफुल रहने के बाद भी कि वो कोई ऐसा स्टेप ना ले जो चाइनीज को जिससे दिक्कत हो, हमने देखा कि चाइनीज हैव नॉट बीन वेरी विलिंग टू एकोमोडेट और टू बी सेंसिटिव टू इंडियाज इंटरेस्ट। और इसी वजह से आज हालत ये आ गई है कि चाइना के एग्रेशंस या उसके एग्रेसिव एक्शंस की वजह से ये सारी कंसिडरेशंस जो पहले इंडिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था जिनको लेके, अब वो नहीं है सेंसिटिव। मतलब कि अब चाइना नाराज होता है तो होए, कोई दिक्कत नहीं।
ओके, मंजीत का क्वेश्चन है कि सर इंडिया सर कैन इंडिया विन ओवर चाइना? ओके, मतलब किस तरह की आप डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं? मतलब किस तरह की बात कर रहे हैं मंजीत? किस तरह की विन ओवर चाइना का मतलब क्या है? कई तरह की कन्फ्लिक्ट तो कई तरीके के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को और क्लियर करें कि आप किस तरह के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, किस तरह की वॉर की बात कर रहे हैं? चाइना के ऊपर जीत किस चीज के ऊपर, किस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में? मंजीत प्लीज अपने क्वेश्चन को क्लियर करें। मतलब आप क्या चाहते हैं? आप डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन के केस में इन इंटरनेशनल फोरम इन ऑन पॉलिसी इशूज? अच्छा, किस इंटरनेशनल फोरम में, ये भी आपको बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल डब्ल्यूटीओ में तो हम चाइनीज के साथ कॉपरेशन कर रहे हैं, क्लाइमेट नेगोशिएशन में भी हम चाइनीज के साथ कॉपरेशन कर रहे हैं क्योंकि हमारा उनका स्टैंड सेम है। तो और किस फोरम में आप चाह रहे हैं? यूनाइटेड नेशन में, हाँ डेफिनेटली चाइना एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, वहां पास डेफिनेटली वो ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन जनरल असेंबली में हमारे साथ बहुत सारी कंट्रीज हमारे साथ में है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप में, तो मैंने आपको बताया ना कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप में पर चाइना एक परमानेंट मेंबर है और हम कई बार नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में उसमें रह चुके हैं। ओके, तो यहाँ पास चाइना इज डेफिनेटली better is in better position because of its permanent security council membership. ओके, अगर आप डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं तो ऐसा कहा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपने प्रीवियस डिस्कशन में देखा है कि अमितेंद्र पाटिल की अगर आप बात करें तो ही हैज एनालाइज्ड दिस पर्टिकुलर इशू इन गुड डिटेल एंड देयर ही शोज दैट कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है वो चाइना के केस में, चाइना के पास, इंडिया चाइना के केस में चाइना के पास ज्यादा है। ओके, फिर कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल भरत करनाथ ने सजेस्ट किया था टू गो फॉर atomic munitions demolitions. Okay, so that are similar to, or they are actually nuclear landmines. तो भरत करनाथ का कहना था कि these are the only effective nuclear deterrence policy that we can adopt against China. लेकिन आपको पता है कि फिर मैंने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और इंडियन आर्मी, इन सब का व्यूज आपको प्रोवाइड किए थे, वेयर इट वाज बिलीव्ड बाय दोज फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स दैट atomic munition demolitions cannot be effective in the rough mountainous terrain that we have along India-China border, especially when India is a downstream nation. क्योंकि वहाँ पास जो लोकल एटॉमिक म्यूनिशन डिविजन्स एक्चुअली है क्या, ये एक तरह के टैक्टिकल वेपन्स है। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो तब यूज करना अच्छा होता है जब कोई भी कंट्री एक अप स्ट्रीम नेशन, लेकिन चाइना के कॉन्टेक्स्ट में हम एक डाउन स्ट्रीम नेशन है। तो जो इससे जो लॉस होगा और जो रेडिएशंस वगैरह से जो नेगेटिव इफेक्ट होगा वो डेफिनेटली हमारे लिए ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं। देयर अप्रोच दस फार, फर्स्ट not moving past talks to operationalize the Quad and then deliberately forestalling any use of its military dimension hasn't yielded any dividend to Quad members. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट को देखें फिर से। Beijing has been against this informal grouping since 2007 when the Quad was first conceived. ठीक है, आगे। But given China's aggressive actions, it is unlikely that its opinion, that is, Chinese opinions, will be serious consideration for रीजनल पॉलिसी मेकर्स। अब चाइना के ओपिनियन जो है
नहीं कंसीडर किए जाएंगे, इनका चाइना का कंसर्न कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब चाइनीज जो कंसर्न्स थे उनके लिए अब सेंसिटिविटी खत्म हो गई। देयर अप्रोच दस फॉर यहां देयर अप्रोच का मतलब है रीजनल पॉलिसी मेकर्स का। दस फॉर first, not moving past talks to operationalize the Quad, and then deliberately forestalling any use of its military dimension, hasn't yielded any dividend to Quad members. तो कौन सा अप्रोच? पहला, नॉट मूविंग पास्ट टॉक्स टू ऑपरेशनलाइज क्वाड, मतलब क्वाड को ऑपरेशनलाइज ना करना बिकॉज ऑफ चाइनीज कंसर्न्स, एंड देन डिलिबरेटली फॉरस्टॉलिंग एनी यूज ऑफ मिलिट्री डायमेंशन, और मिलिट्री डायमेंशन को फॉरस्टॉल करना, उसे शामिल ना करना, हैजंट यील्डेड एनी डिविडेंड टू क्वाड मेंबर्स। क्वाड मेंबर्स को कोई फायदा नहीं हुआ है। चाइनीज कंसर्न्स को अगर हम सेंसिटिव होते हैं उसके लिए, तो उसका ये मतलब नहीं है कि चाइना हमारे कंसर्न्स को या क्वाड मेंबर्स के कंसर्न्स के लिए सेंसिटिव होता है। इस तरह की रेसिप्रोसिटी चाइना की तरफ से नहीं दिखाई गई। ओके, यहां मतलब यह है कि अगर हम चाइनीज कंसर्न्स को लेके अगर सेंसिटिव होते हैं, तो ये देखा गया है कि उसका मतलब चाइना उस केस में रेसिप्रोकेट नहीं करता है। चाइना नहीं अपने आप को सेंसिटिव बना देता है हमारी जरूरतों को लेके, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला पॉइंट, दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू ऑफ इंडिया where the ongoing boundary tussle with China has significantly eroded the remnants of trust between two Asian giants. India is a good example. Why India is a good example? इंडिया एक अच्छा एग्जाम्पल क्यों है इसको, इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट का, कि इंडिया को आप देखेंगे, इट टुक एवरी पॉसिबल स्टेप एंड इट वाज ऑलवेज कॉशियस and sensitive about Chinese concerns with regard to groupings like Quad, even with regard to its relationship with USA and even Japan, ठीक है। और क्वाड को मिलिट्री अलायंस या स्ट्रेटेजिक अलायंस के रूप में डिपेक्ट करने में भी इंडिया को दिक्कत थी अभी तक, लेकिन और दिक्कत थी, मतलब दिक्कत का मतलब एक ही कारण था सबसे ज्यादा, कि इंडिया वॉज वेरी सेंसिटिव टू चाइनीज कंसर्न्स। चाइना को यहां दिक्कत थी तो इंडिया ने बोला कि चलो हटाओ, लेकिन चाइनीज have not shown any reciprocity in this regard, and they have been flagrant of India's concerns in this particular region that is very much visible in Galwan Valley. Okay,
And that is why it is said that now this particular instance of Quad members, especially India, hasn't yielded any dividend. कोई फायदा नहीं हुआ इस तरह की सेंसिटिविटी को शो करने का. चाइनीज के कंसर्न्स को लेके जो सेंसिटिविटी है उसको शो करने का कोई फायदा नहीं हुआ. ओके, आगे देखिए. That is why it is said that this is particularly true of India, where the ongoing boundary tussle with China has significantly eroded the remnants of trust. जो भी बचा कुचा ट्रस्ट था वो भी खत्म हो गया ये टू एशियन जायंट्स के बीच में, दैट इज चाइना एंड इंडिया. ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछे यहां पास. चलिए आगे चलते हैं. तो by inviting Australia to Malabar exercises, New Delhi is signaling that it might be willing not only to set its past caution in standing up to Beijing, but to bear the cost that might come with such a decision. तो यहाँ पास ऑस्ट्रेलिया को मालाबार एक्सरसाइज में इनवाइट करके क्या सिग्नल कर रही है दिल्ली, मतलब इंडिया क्या सिग्नल कर रहा है, that it might be willing not only to shed its past caution that it has shown when it expressed its sensitivity to Chinese concern, okay, but to bear the cost that might come with such a decision, that it may actually antagonize China even more. And that is something that New Delhi is ready to face now. And rightly so, because sensitivity to Chinese concerns has not yielded any result. Okay, अगर आप नोटबुक लेकर बैठे हैं तो कुछ लिखते भी जाइएगा. सेंसिटिविटी टू चाइनीज कंसर्न्स has not yielded any result for India. एग्जाम्पल क्या है? गलवान वैली skirmishes conflict. However, whether it will be enough to deter China from its aggressive intentions remain far from clear. तो चाइना को उसके एग्रेसिव इंटेंशन से डेटर करना क्या इतना काफी होगा कि नहीं, ये अभी क्लियर नहीं है. मतलब हर्षवी पंत का कहना है कि दिस इज नॉट क्लियर. एंड व्हाई दिस इज नॉट क्लियर? बिकॉज द मोस्ट कंक्रीट डेवलपमेंट इन दिस रिगार्ड वुड बी whether, as I told you, any particular country, be it Quad member or any other bilateral, any other member that India is dealing with in bilateral sense, is willing to provide physical and logistical help in real battleground against China. अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या है फिर? वो रियल सेंस में, कंक्रीट सेंस में वो चीज वैल्यूबल नहीं है हमारे लिए. ओके, बहुत ज्यादा. लेकिन डेफिनेटली उसके बेनिफिट्स हैं, ऐसा नहीं है कि उसके कोई बेनिफिट्स ही नहीं है. चलिए आगे देखते हैं. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. Give me 1 minute, I will resume the discussion.
ओके, सो रिज्यूमिंग अवर डिस्कशन हियर, जैसा कि मैंने बताया कि अब इंडिया का चाइनीज कंसर्न्स को लेकर सेंसिटिविटी इंडिया को कोई रिजल्ट नहीं दिया है, इसलिए इंडिया हैज गॉन पास टू इट एंड नाउ इंडिया इज नॉट गिविंग एनी इंडिया इज नॉट बीइंग सेंसिटिव टू चाइनीज कंसर्न्स एनीमोर. ओके, राहुल का क्वेश्चन है, राहुल कुमार, उनका क्वेश्चन है कि डू क्वाड मेंबर्स अदर क्वाड मेंबर्स हैव सेम कंसर्न्स. अच्छा, हाँ, डेफिनेटली. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप देखें यूएसए को, तो यूएसए कंसीडर्स चाइना टू बी द लोन चैलेंज, ओनली चैलेंज के जो इसकी सुप्रीमेसी है जो यूएसए ने एस्टैब्लिश कर रखी है, और चाइना इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर टू रिप्लेस यूएसए टू गेन नंबर 1 पोजीशन. फिर ऑनगोइंग ट्रेड वॉर जो है, ओके, फिर यूएसए के एलीज का चाइना के द्वारा एंटेगोनाइज करना, मतलब यूएसए के जो एलीज हैं जापान, साउथ कोरिया, ओके, इस पर्टिकुलर रीजन में, तो उनको चाइना लगातार क्या करता है, ट्रबल करता है. ओके, तो चाइना का एक जो ग्लोबल एम्बिशन है वो है एक्चुअली यूएसए को रिप्लेस करना. चाइनीज लीडरशिप के द्वारा कुछ इस तरह के स्टेटमेंट भी दिए गए हैं कि Chinese preeminence in global scenario is inevitable. The only question before Chinese leadership is how to ensure peaceful decline of USA. ये इस तरह की चीजें चाइना की तरफ से आई हैं. तो मतलब क्या है कि कैसे, मतलब चाइनीज लीडरशिप के सामने क्वेश्चन ये है कि कैसे पीसफुल डिक्लाइन ऑफ यूएसए को इंश्योर किया जाए. तो यूएसए डेफिनेटली चाइना को एक बहुत बड़ा खतरा मानता है अपने प्रीपॉन्डरेंस में, अपने अपने डोमिनेंस के लिए. जापान, आप जानते हैं, जापान एंड चाइना हैव बीन ट्रेडिशनली दे हैव बीन एनिमीज. तो बहुत सारी लड़ाइयाँ वगैरह हुई हैं, एक पूरा का पूरा हिस्ट्री है जहाँ जापान ने चाइना को बहुत लूटा और चाइना ने जापान को बहुत हार्म कॉज किया. अगर आप दिस 21st सेंचुरी की बात करें तो अंडर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे देयर हैज बीन समथिंग कॉल्ड the emergence of the concept of dynamic defense. Okay, dynamic defense. तो उसमें है क्या कि जापान जो एक पैसिफिस्ट स्टेट बन गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, उसको, उस इमेज को चेंज करने के लिए ट्राई किया जा रहा था शिंजो अबे के टाइम. ओके, हालांकि प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे इज नो मोर अ प्राइम मिनिस्टर इन जापान, so that is why all that has gone to the back burner. But still, you can see overt and covert attempts by Japan to change its image. Okay? तो जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले डिस्कशंस में बताया कि जापान अपनी इस इमेज को चेंज करना चाहता है, जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलप हुई है. फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में आपने ये भी देखा कि यूएसए's allies like Japan and Korea, especially in context of Korea, this was much visible, South Korea, that Trump administration was insisting on making these allies to pay more to USA for guaranteeing their security. In that way, in that sense, you can say that these allies were increasingly realizing that they cannot continue outsourcing their security to USA and they need to stand on their own. Japan is also such country where it is trying nowadays to stand on its own to safeguard its interest against countries like China. Okay, so you may see a time emerging after say 1 or 2 decades where these countries which are under US nuclear umbrella at present time might be developing their own security architecture against increasing Chinese adventurism in their neighborhood to safeguard their interest. Okay, and might discontinue outsourcing their security to USA. उस कॉन्टेक्स्ट में आप जापान को भी देखेंगे कि जापान भी यूएसए के जापान भी चाइना के अगेंस्ट इमर्ज हो रहा है. और फिर बचा ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया का मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया इनिशियली हैज बीन नॉट विलिंग टू गो विथ इंडिया in 2007 when it was called for Malabar exercises, but after that
on some occasions it has shown certain interest, but that was not heeded to, or that was not given much attention to by India also, because Indians have been very sensitive to Chinese concerns. फिर आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने, जब अभी अभी आपने एनालिसिस में देखा इसके पहले वाले आर्टिकल में, कि Australia, when it went ahead with its decision to go or to conduct investigation on COVID-19 origin, then that was something which was negated by China. China became very angry on this particular step adopted by Australian government and various other issues. For example, Australia is really a bridge, as I told you, between Indian Ocean and Pacific Ocean, and in that sense, it has major economic and strategic interest in the safety and security of Indo-Pacific region. Okay, so it is also going to stress on free and open Indo-Pacific. तो बिल्कुल इंडिया के अलावा भी दूसरों के मेजर स्टेक्स हैं. ओके, एंड दे विल बी, दे आर इक्वली कंसर्न. ठीक है, चाइना का इंडिया के साथ बॉर्डर है, इसलिए वहाँ बॉर्डर स्कर्मिशेस है, तो हम फिजिकल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी देख पाते हैं, लेकिन दूसरी कंट्रीज के भी अपने अपने बहुत सीरियस कंसर्न है इंडिया की ही तरह. ओके, तो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड एक्चुअली है क्या कि इंडियन ओशन इज रिप्लेसिंग नॉर्थ अटलांटिक एज द हब ऑफ द ट्रेड, ओके, ग्लोबली. और उसमें इन सारी कंट्रीज जो पास में आ रही हैं, आपने फ्रांस और जर्मनी और यूके जैसी कंट्रीज को भी यहाँ पास इंटरेस्ट लेते देखा है, और फ्रांस को तो बहुत एक्सटेंसिव वे में यहाँ पास अपनी आइडेंटिटी को इंसर्ट करते देखा है कि इट इज एन इंडो पैसिफिक स्टेट. तो उसका कारण यही है कि द इंटरेस्ट ऑफ ऑल दीज कंट्रीज एक्चुअली अलाइन विथ इंडिया. सो फॉर एज द सेफ्टी सिक्योरिटी of Indian Ocean is concerned or Indo-Pacific region is concerned. Okay, so I think this is clear now. अगर आपको कोई और एडिशनल क्वेश्चन इसमें पूछना हो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, तो यू कैन आस्क. Okay, by inviting Australia to Malabar exercises, New Delhi is signaling that it might be willing not only to shed its past caution in standing up to Beijing, but to bear the cost that might come with such a decision. Okay, so because that particular step of inviting Australia to Malabar exercises has been read by Global Times as adding to a conclusive chapter in formation of strategic alliance, okay, against China. That was the reading of Global Times. ओके, और दूसरे तरीके के जो न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ चाइनीज़ में, आप जानते हैं कि चाइनीज़ मीडिया जो है स्टेट लेड मीडिया है, तो वहाँ पास जो न्यूज़ आएगी आप कह सकते हैं कि दैट इज द ओपिनियन ऑफ चाइनीज़ गवर्नमेंटल एस्टैब्लिशमेंट. ओके, सो इट्स दैट काइंड ऑफ रीडिंग इज लाइकली टू मेक चाइना वेयर मोर एंग्री, बट दैट इज समथिंग दैट इंडिया इज नॉट कंसर्न अबाउट टुडे, और इंडिया इज रेडी टू फेस चाइना even with that particular interpretation that they have. However, and that particular interpretation is not entirely incorrect also. Okay, so India is increasing interaction with Quad members and giving it a final giving it a final shape of strategic alliance is very much guided by the events that took place recently, especially in context of China, where both countries are in the loggerheads, okay, along the border in Ladakh region in Galwan Valley. However, whether it will be enough to bear China from its aggressive intentions, deter China from its aggressive intentions, remains far from clear. अब क्या इस तरह के स्टेप, क्वाड जैसे स्टेप, और यह ऑस्ट्रेलिया को मालाबार एक्सरसाइज में इनवाइट करना, क्या ये एनफ है चाइना को डेटर करने के लिए? ये चीज अभी देखी जानी है. ठीक है, नेक्स्ट है रोल ऑफ ईस्ट एशिया समिट इन इंडो पैसिफिक एंड ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल चर्न. अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो बस मेरे दिमाग में आ गया, इसलिए आपको बता दे रहा हूं कि ईस्ट एशिया समिट के ऊपर 2015 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है. ऑल्दो वी आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन द प्रीलिम्स पार्ट हियर, माय डिस्कशन एक्चुअली फोकसेस on the relevance of recent issues in Indian foreign policy that you can add in your PSIR answers in form of value addition. Okay, so yes, so this is about East Asia Summit.
in Indo-Pacific and ongoing geopolitical journey. The role of that East Asia Summit can play. So I told you must be knowing that India is not part of ASEAN, but India is part of East Asia Summit. ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं इस चीज़ को. The East Asia Summit, which was established on December 14, 2005, has increased its membership from original 16 to 18 countries, comprising of 10 ASEAN countries, along with Australia, China, India, Japan, New Zealand, Republic of Korea, United States, and Russia. Okay. रिपब्लिक ऑफ कोरिया किसको बोलते हैं? साउथ कोरिया. ठीक है, तो ईस्ट एशिया समिट के मेंबर्स कौन है? 10 एशियान मेंबर्स, एशियान कंट्रीज हैं. और फिर है अदर 8 कंट्रीज कौन है? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, यूएस एंड रशिया. So these are East Asia Summit members. अच्छा, the participating countries in East Asia Summit represent over 50% of global population. 50% of global population, and with a total GDP estimated at $49.4 trillion. That accounts for around 58% of global GDP. ठीक है, 58% ऑफ ग्लोबल जीडीपी ये अकेले 20 कंट्रीज की है. G20 में कितने मेंबर्स हैं? 19 कंट्रीज हैं और EU ग्रुप है. एंड G20 एक्चुअली accounts for 80% of global GDP. East Asia Summit accounts for, the membership here accounts for 58% of global GDP. ठीक है, आगे चलिए. The East Asia Summit, which helps build dialogue for discussing issues of priority such as energy and environment, finance, education, cooperation in terms of humanitarian assistance and disaster relief (HADR), pandemics, and issues of connectivity, seeks also to advance strategic balance among the key powers in the region. Note करें इस चीज को. This shows the importance of East Asia Summit. तो किसके ऊपर डायलॉग में हेल्प करती है? फॉर डिस्कसिंग इश्यूज ऑफ प्रायोरिटी सच एज एनर्जी, एनवायरमेंट, फाइनेंस, एजुकेशन, कॉपरेशन इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, पैंडेमिक्स एंड इश्यूज ऑफ कनेक्टिविटी. सीक्स आल्सो टू एडवांस स्ट्रेटेजिक बैलेंस अमंग द की पावर्स इन द रीजन. ठीक है, ईस्ट एशिया समिट मेंबर्स स्टेट्स geographically fall within Indo-Pacific, which is presently the subject of intense geopolitical and geoeconomic discourse. तो ईस्ट एशिया समिट के जितने मेंबर्स हैं, जैसे पूरा का पूरा आसियान कम्युनिटी, फिर ऑस्ट्रेलिया भी इंडो पैसिफिक का है, चाइना भी इंडो पैसिफिक में है, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया. All of these countries share border either with Pacific Ocean or Indian Ocean. ठीक है, तो पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन और बीच में ये जो लैंड मास है, इसी को तो इंडो पैसिफिक रीजन बोलते हैं. ठीक है, और ईस्ट एशिया मेंबर्स क्या है? वो ज्योग्राफिकली कहाँ लोकेटेड है? इंडो पैसिफिक में. और इंडो पैसिफिक क्या है? विच हैज इमर्ज्ड लेटली एज अ इंटेंस जियोपॉलिटिकल एंड जियोइकोनॉमिक डिस्कोर्स, एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटेंस जियोपॉलिटिकल एंड जियोइकोनॉमिक डिस्कोर्स. कौन सा रीजन? इंडो पैसिफिक रीजन. ठीक है, ongoing developments in the Indo-Pacific region amounts to an escalation of security threats. How? Malabar exercises joined by Australia, that means Quad, tape
taking shape of an strategic alliance. ठीक है, इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, trilateral. Then policies and doctrines released by other countries like UK, Germany, France. Then ASEAN, ASEAN group also taking interest because it has direct stakes in free and in open Indo-Pacific. Then Chinese aggression in South China Sea, in East China Sea, and also its incursive policies in Indian Ocean. All these are the developments in the Indo-Pacific region which amount to escalation of security threats. ठीक है, ये चीज इसको इंडिकेट कर रहे हैं. दिस रेंजेस फ्रॉम टेररिज्म टू कन्फ्लिक्ट्स अमंग कंट्रीज. तो पायरेसी के इशू, टेररिज्म का इशू, among terrorism to conflicts among the countries over resources and territory, the great power rivalry between the US and China. This ranges from terrorism to conflicts among countries over resources and territory to the great power rivalry between USA and China. मतलब कि Indo-Pacific region has emerged as a theater of even great power rivalry and also includes issues of terrorism and conflict among द कंट्रीज. तो मतलब यहाँ पास छोटे छोटे इश्यूज भी हैं कन्फ्लिक्ट के, फिर टेररिज्म भी का भी इशू है और ग्रेट पावर राइवलरी का भी थिएटर है, बिकॉज यूएसए एंड चाइना आर अगेंस्ट ईच अदर इन दिस पर्टिकुलर रीजन. ठीक है, यूएसए एंड चाइना राइवलरी इज अ की डायमेंशन इन द ऑनगोइंग स्ट्रेटेजिक डिस्कशन ऑन इंडो पैसिफिक. ओके, ठीक है. तो एक्चुअली ये सब स्टार्ट होता है साउथ चाइना सी में. साउथ चाइना सी में जो चाइना के एग्रेशन था उसको लेके यूएसए की पॉलिसी, पिवट टू एशिया पॉलिसी, पिवट टू एशिया पॉलिसी, फिर उसके बाद रीबैलेंसिंग इन एशिया पॉलिसी, फिर ये सब ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम हुआ, फिर ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम आपने देखा कि यूएसए adopted very antagonistic approach towards China. You can say against China. Okay, both in economic as well as strategic area. Okay, Biden is likely to calm the tensions down with China, but Chinese threat cannot be underestimated even by Biden administration, which seems to be willing to cool off the tensions with China. लेकिन कुछ मजबूरी है, चाइना के स्टेप्स ही ऐसे हैं जो नहीं अवॉइड किए जा सकते. इवन ओबामा was very much willing in adopting the accommodative policy towards China, but was compelled to come out with this kind of policy, that is pivot to Asia policy and then later rebalancing in Asia policy, because again China was very assertive in East China Sea and South China Sea. Okay, threatening US allies also in the region. So that actually puts a dent in USA's image and USA's assertion of being a very domineering power in this particular region. The growing assertiveness of China is accompanied by renewed interest of the US in the region, resulting in an intense strategic competition. ठीक है, चाइना का ग्रोइंग असर्टिवनेस ने यूएसए के इंटरेस्ट को रिन्यू कर दिया. किस तरह से? रिजल्टिंग इन एन इंटेंस स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन बिटवीन चाइना एंड यूएसए. ठीक है, आगे देखिए.
Among the East Asia Summit's member countries, the Indo-Pacific concept is reflected in official documents of Japan, India, Australia, and US, and the ASEAN member states. The Indo-Pacific concept is reflected in official documents of these countries. Okay, so this shows what? The importance that these countries accord to the Indo-Pacific concept. Okay, आगे आइए. These countries share a perspective on Indo-Pacific, which is to ensure a safe and secure maritime space. That actually is very much clear in the expression of Prime Minister Shinzo Abe that he came out with in the year 2016, that is free and open Indo-Pacific. ठीक है, free and open Indo-Pacific. And see again, this common perspective that these countries have, okay, Japan, India, Australia, ASEAN members, and then countries like France, UK, and Germany, with regard to free and open Indo-Pacific, that is something which is propelling them to come out together, okay, with India and in multilateral, bilateral fora to ensure free and open Indo-Pacific. Getting it? इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. In these approaches, while there are convergence of interest aimed at achieving peace and security in the Indo-Pacific, there are also significant variations. And now this actually why I took this particular piece to analyze was this very thing, which is new. Okay, there are commonality of approaches here in the perspectives, and that is a concern for free and Indo-Pacific, but there are variations also, and there we are going to focus on that also. Other members of EAS have different opinion on evolving Indo-Pacific architecture, with China viewing it as a Western-driven narrative to contain its rise. Okay, that is something which was very much. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसमें ब्रिक्स कंट्रीज का. Okay, so BRICS countries started with BRIC, and later South Africa was also invited. तो ब्रिक्स बाद में बना, ये ओरिजिनली ये ब्रिक था. तो ब्रिक में कौन थे? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना. ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना. अब देखिए इन कंट्रीज का एक्चुअली व्हाई दे केम टुगेदर, because of one research paper released by Jim O'Neill, where he says that these countries have grown in last 2 decades, and that growth is equal to 4 times the GDP of UK. It would mean that 4 United Kingdoms got created in the last 10 years. That was something which was reflected in his study. Okay, Acha, leaving that particular debate aside, what I'm pointing out here is this, that if you analyze the countries here, for example, Brazil, Russia, India, China, then notice the power asymmetry that exists between or among these countries. Russia and China are already the members of United Nations Security Council. Yes? Russia and China are also the members which have a stake in creating and coming out with an alternative world order. An alternative of what? Alternative of present world order, which is led by USA and Western Europe. Getting it? USA and Western Europe. तो ये कहा जा रहा था कि इंडिया को ब्रिक्स से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए. मतलब कुछ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स का ये कहना था. मैं सिर्फ एक व्यू अबाउट अभी आपको दे रहा हूँ. ठीक है,
ब्रिक्स से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स में जो सबसे पावरफुल कंट्री है, जो रशिया और चाइना है, उनका एक एंटी वेस्टर्न एजेंडा है, एंटी वेस्टर्न एजेंडा है, और दैट पर्टिकुलर थिंग इज नॉट बेनिफिशियल टू इंडिया. Getting it? Because we do not have any long-term anti-Western agenda. We have been the beneficiary of Western European and North American led international order. And that is why we do not want to create any anti-Western world order, or any world order which could replace this world order which is there, which is led by USA and Western European countries. India, unlike Russia and China, does not have any interest in creating an alternative world order, okay, जहां पास यूएसए और वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स नहीं है. लेकिन रशिया और चाइना का इंटरेस्ट है. बस उसी तरह, उसी कॉन्टेक्स्ट में क्वाड को भी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस के द्वारा यहाँ पास समझा जा रहा है, जहां पास ये भी एक कम्युनिटी का ये भी मानना है कि this particular architecture in Indo-Pacific that is emerging against China is actually the design of Western powers. So this particular view is actually holding that this particular view will signify that whatever that is happening in Indo-Pacific theater is led by Western powers and is going to be fulfilling to the Western interest only. This is not going to be in long-term interest of Asian countries, okay, or even countries like Australia. समझ रहे हो आप इस बात को? तो यही एक डिफरेंट वेरिएशंस जो एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पास, उसके लिए मैं आपको वो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं. ठीक है? कोई डाउट यहाँ पास? यू आर फ्री टू आस्क योर डाउट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क. ओके, चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं. ओके, other members of EAS have different opinions on the evolving Indo-Pacific architecture, with China viewing it as a Western-driven narrative to contain its rise. तो चाइना का व्यू क्या है कि जो इंडो पैसिफिक थिएटर में जो आर्किटेक्चर शेप ले रहा है, वो क्या है? वो वेस्टर्न ड्रिवन नैरेटिव को एस्टेब्लिश करता है, और वो वेस्टर्न ड्रिवन नैरेटिव क्या है? टू कंटेन चाइना, टू कंटेन चाइना. ठीक है, आगे देखिए. इन दिस द आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए इसे. आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक announced in 2019, which emphasize on ASEAN-led mechanisms to promote regional and sub-regional cooperation, can serve as a guide for East Asia Summit. Very important point for your exam. आंसर राइटिंग में इसे इंक्लूड करें. ठीक है, तो यहां पास एक्चुअली नया क्या मिल रहा है आपको? आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक. ठीक, the ASEAN outlook on Indo-Pacific is also intended to be a guiding principle for establishing a cooperative framework in Indo-Pacific amongst the members for promoting engagement in areas of common interest. So ASEAN outlook for Indo-Pacific क्या इंटेंड करता है? इसका इंटेंशन क्या है? टू बी अ गाइडिंग प्रिंसिपल, कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन सके. किसके लिए? फॉर एस्टैब्लिशिंग अ कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क इन द इंडो पैसिफिक. इंडो पैसिफिक एरिया में कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करने के लिए. किसके बीच? अमंग द मेंबर्स फॉर प्रमोटिंग इंगेजमेंट इन एरियाज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. मेंबर्स के बीच में कॉमन इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए. ओके, so I think this is clear. ओके, आप चाहें तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं.
free to ask any question. ओके, तो चलिए आगे चलते हैं. The East Asia Summit is a crucial platform. East Asia Summit is a crucial platform for dialogue and mutually beneficial cooperation in order to address the challenges and uncertainties faced by the region. ठीक है. ईस्ट एशिया समिट क्या है? क्रूशियल प्लेटफॉर्म है फॉर डायलॉग एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन इन ऑर्डर टू एड्रेस द चैलेंज एंड uncertainties faced by the region. Which particular region? It is about Indo-Pacific that we are talking. Indo-Pacific region. ठीक है. The fallout from the ongoing COVID-19 pandemic would have major socio-economic implications. हाँ, तो पैंडेमिक के मेजर सोशियो इकोनॉमिक implications होंगे. That is good. The East Asia Summit needs to devise new directions for collaboration amongst its members in order to effectively respond to this challenge that is emanating from COVID-19. At the East Asia Senior Officials Meeting held in July 2020, the East Asia partners reaffirmed the importance of ASEAN's central role in the regional architecture and highly valued Vietnam's ASEAN chairmanship in coordinating the bloc and its partners' effort to boost cooperation in response to COVID-19, such as its establishment of ASEAN COVID-19 Response Fund and a regional stockpile of medical supplies. Again, understand, although all these groupings are important, but you cannot expect the kind of urgency that India has with respect to China's aggression or China's assertiveness in the region, with all these countries. So for them, in the immediate run, this COVID-19 pandemic and emanating threats and socio-economic impact, all that will be more challenging and more difficult to deal with. मतलब यहाँ पास ये निकल के आता है कि जिस तरह की अर्जेंसी इंडिया को है चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, चाइना की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी पोस्चर्स के कॉन्टेक्स्ट में, चाइना की असर्टिवनेस जो बढ़ रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में, वो अर्जेंसी आप आसियान कंट्रीज से या आउटसाइड पावर्स से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते. क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकते? क्योंकि चाइना और इंडिया बॉर्डर शेयर करते हैं और कोई इमीडिएट स्कर्मिश जब यहाँ पास बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट का फॉर्म लेती है तो इंडिया बिकम्स वल्नरेबल. दैट इज वन. देन इंडिया इज वन हु फेसेस द डायरेक्ट ऑनस्लॉट फ्रॉम चाइनीज हैंड्स डायरेक्टली. दूसरी कंट्रीज के कंसर्न्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैरीटाइम डोमेन में कंसर्न्स हैं. हो सकता है मैरीटाइम बाउंड्री कुछ कंट्रीज की जैसे केस है साउथ चाइना सी में कि वो ओवरलैप करती हो, क्लेम्स ओवरलैप करते हो, लेकिन तभी वो मैरीटाइम बाउंड्री, वहां इकोनॉमिक सेंस वो चीज इंपॉर्टेंट है. लेकिन यहाँ तो ये क्योंकि क्रॉस बॉर्डर जो स्कर्मिसेस है यहाँ पास अलोंग द बॉर्डर, वो डेफिनेटली मतलब दैट इज डेंजरस टू आवर पीपल्स लाइफ ऑल्सो, एंड दैट काइंड ऑफ अर्जेंसी इज नॉट फेल्ट बाय एनी अदर मेंबर other than India. ASEAN asks the member state to help in improving capacity in preventive medicine and in coordinating closely information and experience sharing, along with assistance in development and production of COVID-19 vaccines and medicine. ASEAN ने अपने members से it asked member states to help in improving capacity in preventive medicine. So that again is related to COVID-19 pandemic only. This was also reiterated during 10 East Asia Summit Foreign Ministers meeting held on September 9, 2020, during which the ministers reaffirmed their commitment to facilitating access to affordable, safe, effective COVID-19 vaccines, therapeutics, and diagnostics.
Okay, I think there is no problem here in understanding this. Next, the ministers also emphasized on advancing partnership to effectively address the adverse socioeconomic impacts of the COVID-19 pandemic. Okay, so again, this is, I don't think there is anything difficult here to understand. आगे देखते हैं. In the light of emerging differences of views on the Indo-Pacific, at the 14th East Asia Summit on November 4, 2009, the Indian Prime Minister Narendra Modi stated that East Asia Summit is a logical platform to promote a free, open, inclusive, transparent, rule-based, peaceful, prosperous Indo-Pacific region. Okay, see all the adjectives here. Again, a statement that you can use in your answer. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ क्या स्टेट किया क्या ईस्ट एशिया समिट इज अ लॉजिकल प्लेटफॉर्म व्हाई इट इज अ लॉजिकल प्लेटफॉर्म how it becomes a logical platform because almost or not almost all the members in East Asia, all 18 members in East Asia summit share boundary with either Pacific Ocean or Indian Ocean. So all of them are integral parts of this Indo-Pacific region. ठीक है सारे के सारे मेंबर क्या हैं इंडो पैसिफिक रीजन के पार्ट है and that is why Prime Minister Modi is saying that East Asia Summit is a logical platform to promote free, open, inclusive, transparent, rule-based, peaceful, prosperous Indo-Pacific region where sovereignty and territorial integrity and the application of international law, especially UNCLOS, are assured to all states equally. समझ रहे हैं इसको ये इंडिकेशन कहाँ है इंडिकेशन है चाइना की तरफ यहाँ पास क्योंकि यूएनसीएलओस और दूसरे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके रूल्स रेगुलेशंस के लिए फ्लैग्रेंटली वायलेट करने वाला कंट्री कौन है यहाँ पास चाइना okay so that is why it is being said that East Asia Summit is a logical platform to promote free open inclusive transparent rule based peaceful prosperous Indo-Pacific region where sovereignty and territorial integrity and their application of international law especially UNCLOS are assured to all states equally ठीक है The Indian Prime Minister emphasized on the need for building a cooperative and consultative framework by proposing an Indo-Pacific Ocean Initiative. तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव ये 2019 में शेप लिया है IPOI. Okay, this took shape in last year 2019 November. So along with Sagar, okay, Indian Ocean Rim Association, Indian Ocean Region, IPOI is another initiative here. Indian Ocean Naval Symposium, ये सारे के सारे ग्रुप्स यहाँ पास important है. Through the proposed IPOI, India wants to build a cooperative and collaborative framework among interested states to ensure safe, secure, and stable maritime domain. Okay, safe, secure, and stable maritime domain. Okay, ये चीज आपने कर ली. तो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का
का पर्पस क्या है? टू बिल्ड कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क among the interested states to ensure safe, secure and stable maritime domain. ठीक है? This is the objective of Indo-Pacific Ocean Initiative. Indo-Pacific Ocean Initiatives identifies some. ये please note it down because ये यही चीजें important है आपके एग्जाम के लिए. तो identifies 7 basic facets of maritime cooperation. और वो क्या है? Maritime security, that is first. Maritime ecology, that is second. Maritime resources, third. Capacity building, fourth. And resource sharing. Okay, fifth, disaster risk reduction and management. Sixth, science, technology and academic cooperation. Seventh, trade connectivity, maritime transport. So it मतलब अगर आप देखें तो इकोनॉमिक एंगल है इसका, स्ट्रेटेजिक एंगल है, ओके, और इकोनॉमिक एंगल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्चुअली सस्टेनेबल वे में इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पास करने की बात की जा रही है. तो मैरीटाइम इकोलॉजी, मैरीटाइम रिसोर्सेस, फिर है डिजास्टर रिलीफ एंड रिडक्शन, फिर एकेडमिक कोऑपरेशन, ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन. ये सारी चीज, बहुत सारे डायमेंशंस. दीज आर द 7 बेसिक फेसेट्स ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन. तो इट इज, अब यही है कि कोई अगर आप इन चीजों को नहीं लिखेंगे और किसी ने सिर्फ स्ट्रेटेजिक एंगल या डिफेंस या मिलिट्री एंगल बस में फोकस किया तो डेफिनेटली मतलब वो लूज होता है वहां पास पॉइंट. ओके, सो यू लूज अ पॉइंट देयर if you focus only on military dimension or strategic dimension. So it has so many other dimensions other than strategic or military. ठीक है, आगे देखते हैं. The cooperative framework envisages through IPOI shares complementarities with AOIP's broad areas of cooperation. This is by India and this is by ASEAN. Broad areas of cooperation, which includes maritime cooperation, connectivity, United Nations Sustainable Development Goals 2030, and economic and other areas of cooperation. ठीक है, तो इंडिया द्वारा IPOI और आसियान द्वारा AOIPs की ब्रॉड एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन जो है वो क्या इंक्लूड करते हैं? मैरीटाइम कॉर्पोरेशन, कनेक्टिविटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और इकोनॉमिक एंड अदर एरियाज ऑफ कॉर्पोरेशन. ठीक है, the synergy between IPOI and AOIP, which stresses on building partnership for the free trade and sustainable use of marine resources, would enhance the scope for cooperation, which would be crucial in the post-pandemic economic recovery. ठीक है, so the initiatives that have been adopted by IPOI and the objectives that they try to attain, they are going to be same, or they will be having this synergy so far as building partnership for free trade and sustainable use of marine resources is concerned, and this is going to enhance what? Scope of cooperation, which would be crucial in post-pandemic economic recovery. तो यहाँ पास स्ट्रेटेजिक एंगल किस तो सब किनारे हैं. आपने देखा कि इस तरह की ग्रुपिंग्स और इस तरह के एफर्ट्स मैरीटाइम कोऑपरेशन में स्ट्रेटेजिक एंगल या डिफेंस एंगल के साथ, या समझिए कि उसके अलावा कितनी और चीजों में कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं. ओके, सो डू नॉट मिस दीज पॉइंट्स आल्सो बिकॉज दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड अ वैरायटी टू योर आंसर. ओके, तो वैल्यू एडिशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पास आप नोट कर सकते हैं. IPOI announced by Prime Minister Modi at East Asia Summit indicates how this strategic forum for engagement provides a platform for creating partnership to promote inclusivity, transparency,
a rule-based international order while maintaining the focus uh, centrality of ASEAN and ASEAN-led mechanisms, which are fundamental to India's Indo-Pacific construct. ठीक है, तो यहाँ पास IPOI इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा अनाउंस किया गया था ईस्ट एशिया समिट में, वो क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स हाउ दिस स्ट्रेटेजिक फोरम, दिस IPOI फोरम फॉर एंगेजमेंट के लिए जैसे इनिशिएट किया गया है, प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग पार्टनरशिप. So what this does, it provides platform for creating partnership to promote inclusivity, transparency, rule-based international order, while maintains the focus on centrality of ASEAN and ASEAN-led mechanisms, which are fundamental to India's Indo-Pacific construct. ठीक है, तो ASEAN-led इनिशिएटिव क्या है यहाँ पास? AOPI हम पहले देख चुके हैं. Among the East Asia member states, Australia has welcomed IPOI and has indicated its interest in working with India to develop this initiative. Australia has been willing to cooperate with India in order to ensure free and open Indo-Pacific, and its effort and its initiative in this direction to help India by welcoming IPOI and indicating its interest in working with India for promoting this particular initiative should be seen in that light. Okay. आगे देखिए. आगे देखते हैं. कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी. यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन हियर. Okay. Japan has also appreciated India's announcement of IPOI and confirmed its willingness to discuss concrete cooperation based on the initiative. So, along with Australia, Japan has also been welcoming this particular announcement of IPOI. Okay, Indo-Pacific Ocean Initiative that was announced by Prime Minister in East Asia Summit. Okay, and confirmed its willingness to discuss concrete cooperation based on the initiative. At the 13th India-Japan Foreign Ministers Strategic Dialogue held on October 7, 2020, Japanese side agreed to be the lead partner in the connectivity pillar of IPOI. तो जापान क्या है? 13th India-Japan Foreign Ministers Strategic Dialogue जो 7 अक्टूबर 2020 को हुआ था, उसमें जापानीज साइड ने क्या हुआ? They have agreed to be the lead partners in connectivity pillar of IPOI. So, this way, it indicates full cooperation of countries like Japan and Australia for this kind of initiative announced by India. The need to maintain stability and promote cooperation through a constructive dialogue is the rising trajectory of East Asia Summit. Okay. So what is the rising trajectory of East Asia? The most important reason for existence of bodies like East Asia Summit here is this, that maintain stability and promote cooperation through constructive dialogue. Maintain stability and promote cooperation through constructive dialogue. Okay, so this is something that actually is the objective here. Okay, and this is something for which this platform like ES exists. So being a leaders-led forum, ES provides the platform for high-level dialogue to resolve disagreements and build cooperation to overcome challenges. Okay,
तो लीडर्स लेड फोरम मतलब कि है क्या कि ईस्ट एशिया समिट इज अटेंडेड बाय लीडर्स ऑफ दीज 18 कंट्रीज. And that is why when leaders are interacting and it is not the officials, then they have this platform provides an opportunity for these particular leaders of these countries to resolve their disputes through dialogue and discussion. Okay. तो ये क्या है, ये एक रेलेवेंस शो कर रहा है ईस्ट एशिया समिट जैसे ईस्ट एशिया समिट और इसके जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की रेलेवेंस, क्योंकि यहाँ पास रिप्रेजेंटेशन लीडर्स के लेवल में होता है, इसलिए ये डेफिनेटली एक बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पास स्टेट्स अपने डिस्प्यूट्स को डायलॉग और डिस्कशन के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, आगे देखिए. On the occasion of East Asia Summit's 15th founding anniversary, given the ongoing geopolitical ferment, 15 founding anniversary क्योंकि 2005 में ये बना था, there is a need to take a relook at the reassess to take a relook and reassess its role in order to build this strategic forum to effective response to the emerging challenges in the region. तो जियोपॉलिटिकल फॉर्मेट क्या है? जियोपॉलिटिकल फॉर्मेट इज टू बी सीन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना mainly, and then this assertive stance of China के कॉन्टेक्स्ट में जो काउंटर स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड एंड ट्राइलैटरल, ओके, ट्राइलैटरल मैकेनिज्म्स, बायलैटरल मैकेनिज्म्स, तो वो है जियोपॉलिटिकल फॉर्मेट. ओके, तो देयर इज अ नीड टू लुक टेक अ रीलुक एंड रीअसेस इट्स रोल. किसका? EAS, ईस्ट एशिया समिट का रोल, in order to build this strategic forum to effective response to the emerging challenges in the region. Okay, and the challenge is in this regard is mainly to free and open Indo-Pacific. ठीक है. Any question here? You can ask any question if you want. आपको कोई डाउट है यहाँ पास तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अगर आपकी चीजें समझ में आ रही हैं. अच्छा हाँ, ये राहुल का क्वेश्चन है, राहुल कुमार का. सर, इज इंडिया मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट? अरे राहुल कुमार, मैंने आपको काफी पहले शुरुआत में ही बताया. यस, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट. डेफिनेटली इंडिया मेंबर है, और मैंने आपको बताया कि 2015 में क्वेश्चन आ भी चुका है प्रीलिम्स में. तो आप पूरा का पूरा डिस्कशन देखने के बाद अभी बोल रहे हैं कि इज इंडिया मेंबर? इंडिया डेफिनेटली इज अ मेंबर ऑफ ईस्ट एशिया समिट. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? I'm waiting for your question and then I will move forward. कोई और क्वेश्चन है आपका? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं. The IPOI, that is Indo-Pacific Ocean Initiative, proposed by India is one such framework which, in a post-COVID-19 era, through ASEAN-led mechanisms such as East Asia Summit, could help rebuild growth and ensure stability in the region. तो क्या है IPOI इनिशिएटिव जो है इंडिया का, वो क्या कर सकता है? वो आसियान लेड मैकेनिज्म्स के द्वारा, ओके, आसियान लेड मैकेनिज्म्स यहाँ पास एक्चुअली है क्या? ईस्ट एशिया समिट उनमें से एक है
क्योंकि 18 में से 10 मेंबर क्या है, आसियान के मेंबर्स हैं। तो IPOI आसियान लेड मैकेनिज्म्स, जैसा कि ES एक एग्जाम्पल है, तो मतलब IPOI इनिशिएटिव जो है वो ES जैसी बॉडीज के साथ मिलके या इसको यूज करके या इनसे कोलैबोरेट करके रीजन में ग्रोथ और स्टेबिलिटी को रिबिल्ड कर सकता है। ये पोटेंशियल है किसकी, IPOI की। ओके, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव ईस्ट एशिया समिट जैसे फोरम्स के साथ मिलके ग्रोथ और स्टेबिलिटी को इस रीजन में रिबिल्ड कर सकता है। ओके, India's approach to Indo-Pacific vision is based on cooperation and collaboration. ओके, तो इंडो पैसिफिक विजन में इंडिया का अप्रोच क्या है, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन का है। And IPOI, that is Indo-Pacific Ocean Initiative, being an open global initiative, would depend upon mechanisms such as East Asia Summit to strengthen regional and sub-regional cooperation. है क्या, इस चीज को समझिए कि इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जो 2019 में इंडिया के द्वारा ईस्ट एशिया समिट के प्लेटफॉर्म में शुरुआत की गई, जिसकी ओके वो क्या है, एक ओपन ग्लोबल इनिशिएटिव है। ठीक है, और इस चीज को देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट एशिया समिट है, तो ईस्ट एशिया समिट में हम देखते हैं कि क्वाड के मेंबर्स पूरे, लेकिन चाइना भी है आसियान के मेंबर्स है। ठीक है, तो ईस्ट एशिया समिट क्या है, ये भी एक तरह से समझिए कि बहुत इंक्लूसिव ग्रुप है ईस्ट एशिया समिट। और इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव भी क्या है, ग्लोबल ओपन ग्लोबल इनिशिएटिव। ओके, तो मतलब यहां अभी क्या कह सकते हैं आप कि चाइना के साथ कोलैबोरेशन के लिए खुला हुआ है, क्योंकि ईस्ट एशिया समिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पास चाइना भी है। ओके, तो IPOI इनिशिएटिव या इस तरह के प्लेटफॉर्म, IPOI इनिशिएटिव इस तरह के प्लेटफॉर्म ईस्ट एशिया समिट जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके ओके रीजनल सब रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं, उसको मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पास कुछ एंटागोनिस्टिक नहीं है किसी पर्टिकुलर कंट्री के कॉन्टेक्स्ट को लेके। जैसे क्वाड के केस में क्या है, दैट इज क्लियरली एन अलायंस और अ ग्रुप अगेंस्ट चाइना, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत दिन तक इंडिया जो है कॉशियस रहा, क्वाड को इस तरह की इमेज ना मिले, इस तरह का परसेप्शन क्वाड के बारे में डेवलप ना हो, लेकिन मालाबार एक्सरसाइज और बाकी तीनों कंट्रीज का भी इंडिया की तरह ही चाइना को लेके कंसर्न होना, all that cannot help, but Quad will be seen as something sort of a strategic alliance against China. It has been seen like that, and if you go by the facts of uh, or of the context here, it is actually a strategic alliance against China. Okay, but that is not the case with East Asia Summit or IPOI. Okay, or even IPOI, Indo-Pacific Ocean Initiative. So that is not the case with such kind of grouping, and that is why they are open, they are therefore open global initiative. A disaggregated approach to IPOI in terms of focusing attention on each of its 7 players may provide one channel for proceeding further. जो 7 areas of cooperation है, उनमें से क्या करना चाहिए, in terms of focusing attention on each of its 7 players may provide one channel for proceeding further. एक चैनल प्रोवाइड कर सकता है आगे बढ़ने के लिए, उस कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट को और अच्छे से बढ़ाने के लिए। ठीक है, वो क्या करेगा, आगे एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा।
उसको प्रोपेल करेगा, उस जो ऑलरेडी बिल्डिंग एनवायरनमेंट है कॉपरेशन का उसको प्रमोट करेगा। आगे देखिए, द नेक्स्ट इशू हियर इज अफगानिस्तान। और ये एक बहुत अच्छी एनालिसिस है जी पार्थसारथी के द्वारा दी जा रही है, और you have seen this G Parthasarathy in last Sabha debates also. So he has been working in Afghanistan territory. So he has first-hand experience of Afghanistan, Afghanistani people, Afghanistani officials. तो हम यहाँ पास जो recent developments हुए हैं और कैसे वो इंडिया के इंटरेस्ट को मैटर करते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पास जानेंगे। Okay, so let us start Afghanistan now. Just give me 1 minute. We will resume our discussion. And you can ask any question also. So एक मिनट में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर आपको पिछले टॉपिक में कोई डिस्कशन, कोई डाउट हुआ। Okay. Okay. So let us analyze this particular issue. And here we go. We are going to have it will be helpful in developing the insights. So far as Afghanistan or recent developments in Afghanistan are concerned, and this is really an important area from various point of view. Okay, बहुत important reason है इंडिया के लिए. Afghanistan is in our neighborhood, and all the security concerns that emanate from this particular region are directly important for India. और यहाँ पास कोई भी डेवलपमेंट इंडिया के सिक्योरिटी के लिए, इंडिया के इंटरेस्ट के लिए डायरेक्टली रेलेवेंट है। ओके, तो देखेंगे कि यहाँ पास जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो कैसे इंडिया को अफेक्ट करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में जी पार्थसारथी की ये एनालिसिस हमें काफी हेल्प होगी। प्लीज नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हेन आई हाईलाइट देम। ओके, let us start. As the US prepares to reduce its forces and withdraw from Afghanistan, see why this particular region becomes important for various reasons. One of the foremost reasons is this: that there will be a day when US forces have completely withdrawn. और कल जब मैं SEO पढ़ा रहा था आपको और SEO की इम्पोर्टेंस को शो कर रहा था, तो मैंने वहां पास एक पॉइंट बताया था कि SEO till this point has not played very important role in this region, but is likely to play very important role in regional security
arena, especially after the withdrawal of US forces from this particular region. ओके, अगर आप रिकॉल कर, अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया है, लास्ट डिस्कशन अगर आपने देखा है, तो इसमें मैंने वो पॉइंट बताया। तो जो सिक्योरिटी थ्रेट्स अभी कंटेन कर लिए जा रहे हैं यूएसए की फोर्सेस के द्वारा, वो बहुत उभर के सामने आएंगे जब वो सिक्योरिटी फोर्सेस कंप्लीटली विड्रॉ कर जाएंगे अफगानिस्तान से। इंडिया का रोल उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, ये हम जो है यहाँ पास समझेंगे, और क्या पर्टिकुलर सिक्योरिटी थ्रेट्स यहाँ पास एमिनेट हो रहे हैं जब तालिबान स्ट्रेंथन कर रहा है अपने आप को, और बहुत कंक्लूसिव वे में कर भी लिया है। ये चीज हमें देखनी है। ओके, as the US prepares to reduce its forces and withdraw from Afghanistan, one has to look back at the circumstances that led to its military intervention. And what was this? बड़े जल्दी से मैं अगर आपको इस बैकग्राउंड को दे दूं, तो हुआ क्या कि अलकायदा अलकायदा क्या था? अलकायदा was a terrorist group responsible for 9/11 attack. बाद में जब अलकायदा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली 9/11 अटैक की, तो यूएसए वांटेड टू हंट डाउन अलकायदा, बट अलकायदा वाज गिवन रिफ्यूज एंड सिक्योरिटी बाय तालिबान गवर्नमेंट ऑफ तालिबान कंट्रोल्ड गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान उस टाइम तालिबान की गवर्नमेंट थी, और उसने रिफ्यूज दिया किसको? अलकायदा। तो यूएसए की लड़ाई किससे होगी? डायरेक्टली तालिबान से। ठीक है, देखिए, the Al-Qaeda, largely based in Afghanistan, was responsible for the attack in New York and Washington on September 11, 2001, जिसको हम 9/11 अटैक के नाम से जानते हैं। The US responded with a massive aerial bombardment and invasion of Taliban-ruled Afghanistan within a month. इस फाइट के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं कि 9/11 attack was watershed movement because USA first time acknowledged that
that terrorism was a global problem. इसके पहले क्या होता था कि इंडिया जैसी कंट्री जब अपने इशू को लेके, अपने टेररिज्म के इशू को लेके यूएसए के पास जाती थी, तो यूएसए, अकॉर्डिंग टू यूएसए, टेररिज्म इज अ लोकल इशू. वो लोकल इशू है, तो वो लोकली ही रिजॉल्व किया जाना चाहिए. मतलब इंडिया जैसी कंट्रीज जो है बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलती थी उन्हें यूएसए जैसी कंट्रीज के द्वारा, क्योंकि उनका ये मानना था कि टेररिज्म क्या है, एक लोकल प्रॉब्लम है, एक लोकल इशू है जिसको लोकली रिजॉल्व किया जाना चाहिए. उसके लिए इंटरनेशनल कॉपरेशन और ऐसी कोई जरूरत नहीं. लेकिन 9/11 का अटैक ये दिखाता है, और ये इस चीज को स्टैब्लिश करने में मदद किया, और एक्चुअली स्टैब्लिश ही कर दिया कि terrorism is not a local problem, it is a global problem. Okay, it is no more a local issue, it is a global issue. And it will require international collaboration, or collaboration among countries at international level to fight against, to accept this challenge and to fight against it. ओके, तो उसी टाइम वहां पास जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने डिक्लेयर किया था ग्लोबल फाइट ऑन टेररिज्म, जिसमें उन्होंने बोला था कि इन द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म ईदर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस. दिस केम फ्रॉम जॉर्ज डब्ल्यू बुश. ओके, आगे देखिए. और फिर मैं एक चीज और बताता हूं, यहाँ पास थोड़ा सा बैकग्राउंड, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपको इस चीज को समझना है कि आप ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है आप इसकी इसको गेन कर सके. आगे देखिए. फिर क्या हुआ कि इंडिया वॉज वेरी हैप्पी, और इंडिया वॉज शेयरिंग द कंसर्न्स विथ यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, इंडिया डिप्लोर्ड दिस काइंड ऑफ कोवर्ड अटैक. लेकिन India was happy that at least USA acknowledged this particular issue of terrorism to be a global one, and India was very much willing to forward any kind of cooperation that USA needed in this regard. Okay, but again, to India's despair, USA was eyeing Pakistan. Why? Because of this cartographic importance to the Pakistani region. अफगानिस्तान है ये, और ये है पाकिस्तान. तो अगर अफगानिस्तान में कुछ मैन्यूवर करना चाहता है यूएसए, तो उसके लिए पाकिस्तान का असिस्टेंस यहाँ पास जरूरी होगा. ओके, और इस वजह से इंडिया के बहुत ओपनली सपोर्ट करने के बाद भी, या इंडिया का कंप्लीटली यूएसए को सपोर्ट करने के लिए विलिंग होने के बाद भी, यूएसए को पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत थी. ओके, और पाकिस्तान को यूएसए ने फ्रंट लाइन स्टेट बोल दिया. फ्रंट लाइन स्टेट in the war against terrorism. See the irony here. Pakistan, a country which has resorted to the use of state-sponsored terrorism to fulfill its foreign policy objectives, is being declared as a frontline state against terrorism. Okay? This was something which was problematic to India. This was something with which India felt very problematic about. Okay, तो ये है कॉन्टेक्स्ट. अच्छा, पाकिस्तान एक सेंस में और भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल रहा है कि पहले जो यूएसएसआर का इंटरवेंशन हुआ है 1970s के लास्ट ईयर्स में अफगानिस्तान में,
वहां पास यूएसएसआर को डिफीट करने में के लिए अलकायदा सक्सेसफुल रहा है। और उस टाइम अलकायदा को सपोर्ट मिला था यूएसए से पाकिस्तान के थ्रू। समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पास पहले बैकग्राउंड दे रहा हूं। एक ये बात हो गई। दूसरा, मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि अलकायदा एक ऐसा ग्रुप है जिसको पाकिस्तान ने ही तैयार किया था यूएसए की मदद से, ये भी कहा जा सकता है। अब इंडिया इस कॉन्टेक्स्ट में कहां पास स्टैंड करता है? इंडिया इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसे स्टैंड करता है कि पहले इंडिया का जो रिलेशन था विथ प्रीवियस गवर्नमेंट्स इन अफगानिस्तान, दैट हैव बीन वेरी गुड। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडियाज रिलेशन with all the governments that existed in Afghanistan before the year 1996 सबसे अच्छा रिलेशन रहा है। ओके, अगर आप इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन पढ़ते हैं तो चीज आप देखेंगे। बट इंडिया डिड नॉट शेयर वेरी गुड रिलेशन विद तालिबान विच केम टू पावर इन द ईयर 1996। तो 1996 के बाद अफगानिस्तान में तालिबान का रूल रहा, और सिर्फ तालिबान एक ऐसा ग्रुप था जिसके साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं थे। उसके अलावा अफगानिस्तान में जो जो गवर्नमेंट बनी, ओके, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिप्लेस करने वाली गवर्नमेंट बनी, उन सारी गवर्नमेंट से इंडिया के अच्छे रिलेशन रहे। लेकिन तालिबान के साथ रिलेशन अच्छे ना होने की वजह से चीजें गड़बड़ हुई, और आपने कांधार हाईजैक वगैरह जो एपिसोड है वो तालिबान गवर्नमेंट के टाइम में ही हुआ है। अब एक जो चैलेंज यहाँ पास स्टैब्लिश होता है कि Indian government has never been willing to cooperate with Taliban, and when under the aegis of Pakistan, it would actually credit should be given to Pakistan. Pakistani foreign policy actually got advantage and edge over Indian foreign policy here because it succeeded in convincing the global community to first point acknowledge the difference that there are two groups. One is good Taliban and the other is bad Taliban. And second point, Taliban should be brought about in the mainstream dialogue process and should be given considerable stake in Afghanistan in Afghanistani government. Okay, as part of any conclusive solution to the Afghanistani problem. Look, Taliban, because it made definitive advancements, global community was of the opinion that Taliban should be an important factor or important player in any kind of government that takes control over Afghanistan after US withdrawal. अब इंडिया के लिए एक चैलेंज बन गया ये, क्योंकि इंडिया सिर्फ और सिर्फ तालिबान एलिमेंट से, तालिबानी गवर्नमेंट से ही दिक्कत थी, या तालिबान से ही दिक्कत थी, और तालिबान एक डेफिनेटिव एडवांस वहां पास कर चुके थे, और ग्लोबल कम्युनिटी इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी थी, इस बात को अब सपोर्ट कर रही थी कि तालिबान को गवर्नमेंट प्रोसेस में जो अफगानिस्तान में होगा, जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें डेफिनेट स्टेक्स मिलने चाहिए, मतलब तालिबान उसका पार्ट बनना चाहिए। ओके, तो ये इंडिया के लिए चैलेंज था। तो ये बैकग्राउंड है जिसको आपको याद रखना है, जिसके बाद हम इसको एनालाइज करना शुरू कर सकते हैं। ओके, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर। The Al-Qaeda, largely based in Afghanistan, was responsible for the attacks on New York and Washington September 11, 2001. US responded with a massive aerial bombardment and invasion of Taliban ruled Afghanistan within a month. Taliban leader Mullah Omar, who played host to Osama bin Laden and his followers, fled to Pakistan. Okay, तो जैसा कि मैंने बताया कि तालिबान ने किसको आश्रय दिया था? अल-कायदा को। और अल-कायदा का उस टाइम कौन था लीडर? ओसामा बिन लादेन। दैट कॉन्फ्लिक्ट हैज नाउ लास्टेड फॉर ओवर 19 years. किसके किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट? यूएसए फोर्सेस के बीच में, और यूएसए फोर्सेस और
तालिबान के बीच में। तो तालिबान क्यों यूएसए की से यूएसए तालिबान से क्यों झगड़ा हो गया यूएसए का? क्योंकि तालिबान ने अलकायदा को शरण दी, ठीक है ना, अलकायदा को सेफ सेंचुरी प्रोवाइड की। और अलकायदा क्यों से क्या दिक्कत थी यूएसए को? क्योंकि अलकायदा, ओसामा बिन लादेन अलकायदा का ही पार्ट था। ओसामा बिन लादेन कौन है? जिसने 9/11 अटैक किया था, करवाया था। An estimated 1.11 lakh Afghans and 4,092 Americans have died in the conflict. तो 2001 से लेके अभी तक 1 लाख के करीब अफगान्स और 4,000 के करीब अमेरिकन जो हैं यहाँ पास जान दे चुके हैं। Estimates about the cost incurred by the US vary from $778 billion to $1 trillion. Okay. Pakistan was strangely described as a major US ally. Okay, frontline state against terrorism. Major US ally. Actually, इसको status मिला था major non-NATO ally का। Exact जो wording यूज हुई थी ये थी major non-NATO ally. And rewarded liberally with economic and military assistance. Okay, for almost a decade or so, बहुत सारा economic और military assistance मिला। This assistance was used by Pakistan's army and air force against its own Pashtun people in tribal areas. मतलब ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इंक्लूडिंग नॉर्थ वजीरिस्तान नियर द पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर। तो वो खैबर पख्तूनवा का जो एरिया है, पाश्तून पीपल जहाँ पास रहते हैं, उस जगह। In his memoirs, A Promised Land, former President Barack Obama describes the situation prevailing during his visit to Afghanistan in 2012. आप ये यूज कर सकते हैं, ओके, अपने आंसर्स में। He was informed by highly reputed former CIA official that Pakistan military ISI not only tolerated the presence of Taliban leadership in Quetta near the Pakistan-Afghanistan border, but it was quietly assisting the Taliban. क्या है? यूएसए किसको डिक्लेयर कर रहा है? पाकिस्तान को। क्या? मेजर नॉन नाटो एलाई। ओके, किस कॉन्टेक्स्ट में? तालिबान के अगेंस्ट फाइट के कॉन्टेक्स्ट में। और पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई क्या कर रही है? तालिबान को असिस्ट कर रही है। ओके, एज अ मींस ऑफ कीपिंग द अफगान गवर्नमेंट वीक। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को वीक रखना है। ओके, मतलब पाकिस्तान का एक्चुअली यहाँ पास इंटेंशन क्या है? टू कीप अफगानिस्तान गवर्नमेंट वीक। और वो कैसे होगा? जो अफगानिस्तानी गवर्नमेंट के अपोजिट में जो एलिमेंट्स है, जो तालिबान है, तालिबान को हटा दिया गवर्नमेंट से। 1996 में तालिबान आया गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करने। कहाँ पास? अफगानिस्तान में, और सक्सेसफुल रहा। तो 1996 के बाद जो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट थी वो तालिबान कंट्रोल्ड गवर्नमेंट थी, ठीक है। बाद में 2001 में अटैक करके अफगानिस्तान को एक कंप्लीटली, मतलब एक स्टोन एज की जगह पहुंचा दे, लगभग वही किया यूएसए ने। तो वहां पास तालिबान का क्या हुआ? तालिबान को सेफ सेंचुरीज ढूंढनी पड़ी। तो बहुत लोग यहाँ पास टफ टेरेन में भागे, अपने आप को छुपाया कहीं, कुछ लोग पाकिस्तान भी चले गए। अब अफगानिस्तानी गवर्नमेंट किसके हाथ में थी? अफगानिस्तानी गवर्नमेंट का बिल्डिंग प्रोसेस चल रहा था, है ना। तो वो बिल्डिंग प्रोसेस किस तरह से था कि मतलब जिसमें अशरफ गानी वगैरह जैसे लोग थे। तो मतलब कि यूएसए के लीडरशिप में एक नॉमिनल गवर्नमेंट बनाई गई और जिसके अंडर में फिर अफगानिस्तानी गवर्नमेंटल कैपेबिलिटी को लगातार असिस्ट करके उसको स्ट्रेंथन बनाया जाने लगा। वो प्रोसेस अभी भी जारी है ताकि एक दिन अफगानिस्तानी गवर्नमेंट को पूरा का पूरा कार्य सौंपा जा सके। ओके, so that finally USA could hand over all the operational dynamics to the Afghanistani government. Okay, but Pakistan was trying to weaken this government continuously. And how it can do so? By assisting Taliban.
Okay, because if Taliban is powerful, then Taliban will be always against US-led government formation in Afghanistan. And this is something that Pakistan was continuously encouraging. Okay, that is helping Taliban to subvert the formation of government, okay, in Afghanistan. तो मतलब यहाँ क्या है कि यूएसए पाकिस्तान की मदद से जो काम कर रहा था, पाकिस्तान एक्चुअली उसका उल्टा करके ये इंश्योर कर रहा था कि यूएसए ऐसा कभी ना कर पाए. ओके, as a means of keeping Afghan government weak and hedging against Pakistan arch rival India. अच्छा, इंडिया का भी क्या है कि इंडिया ने, जैसा कि मैंने बात बताया, कि तालिबान को छोड़ के अफगानिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट बनी है सबके साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन थे. अब तालिबान अगर स्ट्रांग होता है तो that would amount to the defeat of Indian interest in Afghanistan, because there India would have a weaker hand in dealing with Taliban, because historically India did not support Taliban-led developments or Taliban-led government in Afghanistan that came into scene in the year 1996. And I told you that was also the reason why Taliban government in Afghanistan helped in that Kandahar episode that took place. Okay, IC 814 का केस है जो Kandahar hijack. Obama adds the US government had long tolerated such behavior from a purported ally of supporting it with billions of dollars military and economic aid, despite its complicity with violent extremists and its record as a significant and irresponsible proliferator of nuclear weapons. तो ओबामा यहाँ पास स्वीकार करते हैं कि यूएस गवर्नमेंट हैज लॉन्ग टॉलरेटेड सच बिहेवियर. विच बिहेवियर? इन दिस वेरी केस पाकिस्तान का बिहेवियर. एक जो डबल प्ले यहाँ पास कर रहा है, पाकिस्तान डिक्लेयर किया जा रहा है यूएसए की तरफ से मेजर नॉन नेटो एलाई, फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट वॉर ऑफ टेररिज्म, और कर क्या रहा है? तालिबान को असिस्ट कर रहा है. ओके, और यूएसए का अटेम्प्ट है तालिबान को डिफीट करना, तालिबान को वीकन करना, और पाकिस्तान तालिबान को असिस्ट कर रहा है. This says something about the Pritchell-like logic of US foreign policy. Okay, what is that? Despite his knowledge of such Pakistani duplicity, Obama sounded defensive. Obama sounded defensive while speaking to Pakistan's President Asif Zardari to formally inform him about US actions to eliminate Osama bin Laden. मतलब कि यहाँ पास क्या है कि in a way US knew about the Pakistan's complicity, okay, and duplicity, but even then Obama was being defensive when he informed about US actions to eliminate bin Laden. समझ रहे हैं यहाँ पास प्रॉब्लम कि यूएस भी यहाँ पास क्या है, एक कहना चाहिए कि एक कैपिचुलेशनिस्ट टेंडेंसी यहाँ पास रख रहा है. ओके, समझ में आ रहा है आपको? So I think this is comprehensible to you. There, however, appears to have been no expression of outrage by Obama to Zardari. मतलब Obama very much knew about the Pakistan's complicity, that Pakistan is helping Taliban. Okay, whereas Pakistan has been declared as major non-NATO ally. Okay, frontline state against terrorism and all that. Okay, still there was no outrage by Obama to Zardari. Means USA was not expressing any outrage, any disappointment to Pakistan. Okay, on its duplicity.
providing safe haven to a terror mastermind in cantonment which houses the Pakistan Defense Academy. Means the very location in Abbottabad where Bin Laden was kept safe proves that Pakistani army and possibly its ISI knew of all the development that took place here. It would be naive to believe that Pakistani army establishment did not know about the whereabouts of Osama bin Laden. So when USA took actions against Osama bin Laden, okay, or took action to eliminate Osama bin Laden, the location where they successfully located him, that is Laden, would have asked for an outrageous reaction by United States towards Pakistan. But let alone being outrageous, Obama was defensive to Zardari. Okay, Pakistan is now in strange position. Its Punjabi majority faces continuing resentment in Balochistan. So we know that Balochistan is a restive area. It is a restive province, okay, in Pakistan, where attempts to quell resistance and uprising have been unsuccessful. Okay, Pakistani establishment has been unsuccessful in quelling that resistance and uprising that have been taking place in Balochistan. But over the past decades, there has been growing disquiet in the Pashtun-dominated Khyber Pakhtunkhwa province. Okay, it is northwest frontier province. उसके पास, despite Pashtuns being well represented in the Pakistan army. तो बलूचिस्तान के केस में क्या है कि बलूचिस्तान or Baluchistanis are not well represented in Pakistani army. Okay, so that is why it is well understood their resistance and their uprising against Pakistani state. So there is a whole history to it. That same history is also there with Khyber Pakhtunkhwa area also. But Pashtuns, if you compare their population, then they are represented in Pakistani army, okay, in proportion of their population. But even that area is very restive and very much disturbed. In 2014, Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) conducted a terrorist attack on Army Public School Peshawar, killing 149 people. तो आप जानते हैं कि TTP has been a problematic organization in Pakistan. The then Army Chief General Rahil Sharif responded with a massive attack backed by aerial bombing across North Waziristan. It is the hotbed of Tehreek-e-Taliban Pakistan. Reporting from the scene of the attack, Al Jazeera noted that about 1 million people were forced out of their homes by the offensive, described by Pakistan as a final push to eradicate the presence of Al Qaeda, the Taliban, and the Islamic movement of Uzbekistan that had plagued North Waziristan for 14 years. तो मतलब एरियल बॉम्बिंग जो की गई थी जनरल राहिल शरीफ के टाइम में, that actually that led to the movement of 1 million people. 10 लाख लोग जो है वहां से अपने घर से छोड़ने के लिए मजबूर हुए. और इसको कैसे प्रेजेंट किया गया? एज अ फाइनल पुश टू इरेडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अल-कायदा, तालिबान एंड इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, और जिसने नॉर्थ वजीरिस्तान एरिया को 14 साल से एक्चुअली परेशान करके रखा है. Locals had a little hope of returning home anytime soon. This is about North Waziristan area. Okay, thousands of homes and businesses had been leveled by air strikes and bulldozers. Aid from the federal government was being cut, and security forces were asking residents to sign an agreement taking collective responsibility for any militant presence in their area before they return home. मतलब ये मतलब है कि यहाँ पास every attempt was being made to clear this North Waziristan area of any militancy. Okay, but has it been successful? We will see.
very you will see very quickly here. आगे देखिए, इन नेबरिंग साउथ वजीरिस्तान पाकिस्तानी ट्रूप्स हैड कैरीड आउट अ लार्ज स्केल ग्राउंड ऑफेंसिव इन 2009 displacing thousands, many of whom have not returned home. ठीक है, आगे देखिए, these developments have left refugees from the ruthless Operation North Waziristan skeptical of official promises of a swift end to their suffering. मतलब क्या है कि the steps that have been taken by the establishment here to clear sheet of this very North Waziristan area from any kind of militancy and the promises that they have been making to those people there that this action will be very swift, that is something uh, people have grown skeptical to, because they are not able to see any kind of such swift action or swift development, swift transition taking place in this particular region. मतलब कि जो प्रॉमिस किया जा रहा था, जिस तरह से एक्चुअली यहाँ पास प्रॉमिस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ये स्विफ्टली इस चीज को यहाँ पास से साफ कर देंगे और ये एरिया जो है बहुत क्लियर हो जाएगा। किस केस में? यहाँ नॉर्थ वजीरिस्तान एरिया से मिलिटेंसी को खत्म कर देंगे स्विफ्टली। ये चीज वहां पॉसिबल नहीं हुई है, समझ रहे हैं? और ये प्रॉमिस कि बहुत स्विफ्टली यहाँ पास चीजें मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, ये जो प्रॉमिस किया गया है, ये इसके लिए स्केप्टिकल हैं लोग वहां। ओके, इसके लिए लोग स्केप्टिकल हो गए, मतलब नहीं, उन्हें भरोसा नहीं है कि ऐसा होने वाला है। ठीक, आगे देखिए, the ISI also facilitates cross-border attacks by its proteges in the Haqqani Taliban network on Afghan forces. So ISI is also complicit in this particular reason, where it is continuously trying to subvert the formation of government and strengthening of the governmental organs in Afghanistan, to the extent that it is facilitating the cross-border attacks by proteges, okay, in the Haqqani Taliban network on Afghan forces. The Pashtuns are now making common cause to redress their grievances through Pashtun Tahaffuz movement. Important point. Pashtun Tahaffuz movement, dedicated to waging a peaceful struggle for their democratic rights, reminiscent of the struggle of their legendary freedom fighter Khan Abdul Ghaffar Khan. Okay. So Pashtuns are facing such kind of problems because of, again, this duplicity that Pakistani establishment has been adopting, whereby they have went on helping Taliban and Al-Qaeda to ensure that their arch rival India does not make any definitive advancement in establishing any strategic depth in Afghanistan. Okay, but this very attempt, this very duplicity, or this very complicity has been troubling to Pakistan itself, whereby this attempt or this double standard is hurting its own people, here in this case Pashtuns. ओके, जो ये एरिया है ये पास्थून्स का एरिया है, जहां पास ये पर्टिकुलर चीजें होती हैं, जहां ये डुप्लिसिटी पाकिस्तान के द्वारा की गई है। अब उन्हीं में से कोई पर्टिकुलर ग्रुप बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है,
तो फिर थोड़ी सी भी नौटंकी अगर पाकिस्तान की तरफ से गलत हुई तो वो बहुत बड़ा अटैक करते हैं, और उस बड़े बड़े अटैक से, जैसे आर्मी स्कूल में जो अटैक हुआ था, उसको फिर उसके अगेंस्ट काउंटर करने के लिए फिर पाकिस्तानी आर्मी को बहुत बड़ा अटैक करना पड़ता है। तो ये अटैक काउंटर अटैक में परेशान कौन होता है? पाश्तून्स परेशान होते हैं। समझे इस बात को आप? अगर नहीं समझे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पास। ठीक है, चलिए तो आगे समझते हैं। The Taliban now control vast tracts of territory in Afghanistan, where they repeatedly attack even the capital Kabul. Okay, and this success of Taliban, actually much credit goes to Pakistan also, because Pakistan has never been completely willing to support USA's effort to eradicate Taliban from Afghanistani soil. They always thought that Taliban will be an important asset in defeating India's cause or India's aim of establishing any kind of strategic depth in Afghanistan, because they know that the only force before this 9/11 attack in Afghanistan which was not friendly to India was this Taliban. Okay, are you getting it? So I think this is clear now. मेरे ख्याल से क्लियर है। ओके, आगे चलते हैं। With outgoing President Trump determined to drastically reduce the presence of Afghan army from 4,500 to 2,500 troops, the Taliban are not interested in ceasefire that Americans are desperately seeking. Okay, so at this very point, when USA could not completely eradicate Taliban, let alone defeating them, okay, is now willing to make them legitimate partners in the process of government formation in Afghanistan. And the ongoing fight that is happening between Taliban, some of the Taliban elements, and US forces has reached to an extent where Afghan army or Americans are trying to declare and establish a ceasefire, but Taliban are not ready to declare even ceasefire also. So they are hell bent to fight against these forces. Okay, and their efforts get renewed when they are supported materially by various sections of Pakistan establishment. Okay, the Afghan government is a house divided, with Ghani's erstwhile deputy Abdullah nominated to negotiate with the Taliban in Doha after visiting Pakistan and India. Okay, so this duo came into power in 2014. Okay, Ashraf Ghani became the president and Abdullah became the chief executive, because Abdullah was contesting against Ghani. Second time also Ghani became the president. Okay, Pakistan's policy continues to be based on duplicity. While making out that ISI can influence the Taliban to exercise restraint in Afghanistan, ISI is actually encouraging Taliban to resort to salami slicing by taking control of more and more territory across Afghanistan, much like China attempts on its border with India. So I have used this word salami slicing, okay, many times to explain the context here. समझ रहे हैं? एक बार ढंग से समझ लीजिए फिर से। सैलेमी स्लाइसिंग मतलब सैलेमी को जैसे स्लाइस, सैलेमी के स्लाइस की तरह चाइना ट्राई करता है कि छोटा सा एक स्ट्रिप जो है इंडिया का ले ले,
फिर एक छोटा सा स्टेप इंडिया का ले लें, फिर एक छोटा सा स्टेप इंडिया का ले लें। वही सेलेमी स्लाइसिंग टेक्निक जो है आईएसआई इंकरेज करता है तालिबान को अडॉप्ट करने के लिए अफगानिस्तान में। ठीक है, एक छोटा सा स्लाइस टेरिटरी का ले लें, फिर छोटा सा टेरिटरी का स्लाइस ले लें, इस तरह से अपनी आपको एडवांस करते जाएं, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाते जाएं। The US will have to be persuaded to resort to more extensive use of air power to deal with Taliban. तो अगर तालिबान के साथ डील करना है, तालिबान को डील करना है, तो यूएस को मतलब यूएस नीड्स टू बी परसुएडेड टू रिजॉर्ट टू मोर एक्सटेंसिव यूज ऑफ एयर पावर, मतलब और कहीं ज्यादा एयर पावर, एयर स्ट्राइक्स की जरूरत है, मतलब ड्रोन अटैक्स, इन सब चीजों की और ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरत है तालिबान को कंटेन करने के लिए। ठीक है, ये मतलब है यहाँ पर इसका। It needs to be remembered that Taliban are intensely disliked by a large number of Pashtuns in Afghanistan who loathe their medieval extremism and their ISI masters. तो पाश्तून्स क्या है? They have never been willing to forward much cooperation to Taliban. ठीक है, इनका अपना एक अच्छा कल्चर है और दे आर कंसिडर्ड ब्रेव पीपल, ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं, अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं। आगे तो पाश्तून्स का अपना एक कल्चर रहा है हिस्टोरिकली। तालिबान क्या है? तालिबान को आप कह सकते हैं कि दे आर द, इनकी थोड़ी सी अगर हिस्ट्री आप जानना चाहें तो इनका हिस्ट्री ये है कि दे वर एक्चुअली दे हैव बीन द चिल्ड्रन ऑफ Afghani people who made migration to Pakistan during Afghan civil war. ठीक है, और जब ये अफगानिस्तानी रिफ्यूजीज जब पाकिस्तान पहुंचे तो उनके बच्चों का पाकिस्तानी मदरसाज में जहां पास उनको वहाबी इस्लाम, सलाफी इस्लाम में खूब ट्रेन किया गया। ओके, तो उनको मतलब ब्रेन वॉश किया गया वहाबी इस्लाम, सलाफी इस्लाम में। ये कहाँ किया गया? पाकिस्तानी मदरसाज में, और इसमें पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, इन कंट्रीज का हाथ था, और इनको तैयार किया जा रहा था ईरान के खिलाफ, सऊदी अरेबिया का दुश्मन, और इंडिया के खिलाफ। एक्चुअली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उनको बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिली। तो तालिबान को आप ऐसे समझे। और पाश्तून्स के बारे में अभी आपको बताया कि दे हैव बीन एबल टू प्रिजर्व देयर culture in its precinct form and they are brave people, they are known for their bravery। और bravery का मतलब cleverness नहीं होता, bravery का मतलब chivalry होता है ना, and hospitality, so Pashtuns are known for that। तो पाश्तून क्या है? पाश्तून तालिबान को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहते, और the kind of the brand of Islam that they follow is not Wahhabi or Salafi। Okay, so it needs to be remembered that Taliban are intensely disliked by a large number of Pashtuns in Afghanistan who loathe their medieval extremism and their ISI masters. The non-Pashtun majority of Afghanistan, comprising Tajiks, Hazaras, Uzbeks, Turkmen, Baloch, and others, who constitute 58% of Afghanistan population, had fought the Taliban under the banner of Northern Alliance before the Americans stepped in.
देखिए आप पास जी पार्थसारथी का एक्चुअली डीप एनालिसिस और ये उनका नॉलेज, पार्थसारथी का एक्चुअली नॉलेज अफगानिस्तानी डेमोग्राफी को ये बहुत ज़्यादा क्लियर करता है चीज़ों को यहाँ पास। तो नॉन पश्तून मेजोरिटी जो अफगानिस्तान की है, जो कंसिस्ट करती है, कंप्राइज करती है ताजिक्स, हजारास, उज्बेक्स, तर्कमेन, बलूच एंड अदर्स, which constitute 58% of Afghanistan population, had already fought Taliban under the banner of Northern Alliance. Okay, important information आपके लिए। Before Americans stepped in, they stepped in the year 2001. तो एक्चुअली नॉन पास्तून पास्तून जो है वो तालिबान से को डिसलाइक करते हैं। नॉन पास्तून जो 58% है अफगानिस्तान में, वो तालिबान से हमेशा लड़ते आए हैं अंडर द बैनर ऑफ नॉर्दर्न अलायंस। ठीक है, तो पास्तून एंड वेरियस नॉन पास्तून मेजॉरिटी, ताजिक्स, हजारास, उज्बेक्स, टर्कमेन, बलूच, सब तालिबान से लड़ते आए हैं। फिर द यूएस वुड हैव टू बी परसुएडेड टू डील विद द चैलेंजेस पोज्ड बाय तालिबान पाकिस्तान आर्मी नेक्सस। तो तालिबान को सबसे ज्यादा सपोर्ट अकेले कहां से मिलता है? पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई। तो ये नेक्सस है जो तालिबान को हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। वो ये कभी इसके कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ना होने का सिर्फ एक कारण है, इसका पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई से नेक्सस होना। और पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई का तालिबान को जिंदा रखने का एक बहुत बड़ा रीजन है इंडिया। कि वो चाहते हैं कि तालिबान अगर अफगानिस्तान में रहेगा तो स्ट्रैटेजिक डेप्थ गेन करने में पाकिस्तान विल बी हैविंग ग्रेटर स्ट्रैटेजिक डेप्थ इन अफगानिस्तान देन इंडिया। सो दिस इज व्हाट दे बिलीव। समझ रहे हो आप? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें यहां। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। Apart from Afghan government, there are leaders like former President Hamid Karzai, Abdullah, who can act as the bridge to challenge the Taliban-Pakistan nexus. Okay, मतलब हामिद करजई, अब्दुल्ला। अब घानी से क्या है, मतलब इनको पार्था सारथी ने पास घानी को क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि घानी जब सुप्रीम प्रेसिडेंट बने थे तो उन्हें लगा था कि वो पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट करके अफगानिस्तान के इन चैलेंजेस को क्या करेंगे, फेस करेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि भाई पाकिस्तान अपने आप में क्या है, एक चैलेंज है। पाकिस्तान अपने आप में प्रॉब्लम है अफगानिस्तान के लिए, वो सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। आगे देखिए, a majority of Pashtun strongly feel that Durand Line was unjustly imposed on them as their border during British colonial rule in India. A Pashtun friend, Durand Line अब जाते हैं, this is the line between Pakistan and Afghanistan. Okay? तो डूरंड लाइन वहां जो है वो पास्थून्स को डिवाइड करती है एक्चुअली, और इस तरह से वो क्या है, कोई नेचुरल बॉर्डर नहीं है, वो आर्टिफिशियल बॉर्डर। अब पाश्तून फ्रेंड हैड टोल्ड मी दैट अफगानिस्तान, ये पार्था सारथी, जैसा कि मैंने बताया कि ही हैज अ गुड नॉलेज ऑफ अफगानिस्तानी रीजन, सो मुझे पता था कि यहाँ पास आपको बहुत मदद मिलेगी उनकी एनालिसिस से।
I think this is the analysis really enriching. Okay, a majority of Pashtun strongly feel, है ना? A Pashtun friend had told me that Afghanistan's traditional borders were not along the Durand line but along the banks of Indus at Attock. ओके, तो उसके अफगानिस्तान की जो ट्रेडिशनल बॉर्डर है वो क्या है? अटॉक में, वो ड्यूरन लाइन में नहीं। ड्यूरन लाइन तो डिवाइड करती है वहां की पॉपुलेशन को, वो नेचुरल बाउंड्री बिल्कुल नहीं है। ओके, सो दिस वाज अबाउट हिज एनालिसिस ऑन अफगानिस्तान। ठीक है, एनालाइजिंग द नेक्स्ट इशू हियर, इसको भी जल्दी से कर लेंगे। इंडियाज मैरीटाइम डिप्लोमेसी इन द इंडो पैसिफिक इन परस्यूट ऑफ इट्स नेशनल ऑब्जेक्टिव। तो आप ऑलरेडी इंडो पैसिफिक के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं, और ये दिस इज बाय एम्बेसडर योगेंद्र कुमार, जिसमें आपको कुछ और इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, सो लेट अस कवर दिस ऑल्सो। Broadly speaking, for any country, the national objectives are to secure a conducive external environment for its citizens to develop their natural talent and potential consonant with their civilizational values. For this, not only its external security an imperative necessity, but also the nurturing of international relations facilitating those pursuits, be they economic, cultural, intellectual, or professional. Okay, I think this is simple. The pursuit of these rather complex tasks in terms of managing a country's international relation is the stuff of diplomacy. इन चीजों को परस्यू करना और कंट्रीज के इंटरनेशनल रिलेशंस को मैनेज करना, वही डिप्लोमेसी है। ओके, दिस इज द एनालिसिस बाय योगेंद्र कुमार। फॉर इंडिया दीज टास्क आर particularly challenging. क्यों? इंडिया लिव्स इन डिफिकल्ट नेबरहुड। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर चाइना, फिर यहाँ पास you also face challenges on certain occasions historically with Bangladesh also, Nepal. Okay, with exposure to full spectrum of these challenges ranging from political instability, cross-border terrorism, illegal migrations, transnational crime, military tensions involving nuclear armed neighbors, and the entire area of climate change related impacts in the country and South Asian region. I think this is clear. I don't think there is any problem here. Because of the active external big power interest and intervention in South Asian affairs, India has to leverage its regional and wider international standing in the ongoing global balance of power dynamics. It also involves developing judicial bilateral relations with its neighbors, with most of whom it does not share a natural border. Okay, so in India's case also, it does not share natural border, say, with Myanmar. How? आप देखेंगे वहाँ पास नागालैंड वगैरह के एरिया में क्या है, यहाँ भी नागाज है, वहाँ भी नागाज है। तो ये पॉलिटिकल बाउंड्री जो है वहाँ पास एक्चुअली इम्पोज बाउंड्री। फिर बांग्लादेश के केस में वही है, वेस्ट और ईस्ट बांग्लादेश एक्चुअली दैट वाज अ डिवीजन बाय ब्रिटिशर्स टू डिवाइड इंडियंस, और वही चीज बाद में फिर वो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान हो गया। आप देखेंगे कि वहां पास अगर हिंदू मुस्लिम का इशू बनाया जाए आपको, तो हिंदू Bengali and a Muslim Bengali will have many things in common than a Muslim Bengali and a Muslim Punjabi. ठीक है, तो एक मुस्लिम पंजाबी और मुस्लिम बंगाली में आप बहुत ज्यादा डिफरेंसेस पाएंगे। ओके, और एक हिंदू बंगाली और मुस्लिम बंगाली में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी पाएंगे। तो वहां पर रिलीजन के बेसिस में वहां पास बाद में बाउंड्री खींच गई थी स्टेट जब बना। और उसके पहले आपने देखा है कर्जन की पॉलिसी में, तो ऑल दोज बाउंड्रीज वर नॉट रियल और नेचुरल बाउंड्रीज, वो पॉलिटिकल बाउंड्री जो है वो इम्पोज बाउंड्रीज है।
इसका पता मतलब क्या है, इसका प्रूफ क्या होता है, ये कैसे पता लगा सकता है कि इम्पोज बाउंड्री है कि नहीं है? सिंपल है कि बाउंड्री के इस पार और बाउंड्री के उस पार दोनों जगह जो लोग रहते हैं वो सेम कल्चर को बिलोंग करते हैं, उनका कल्चर सेम है। ओके, उनका जब कल्चर सेम है तो डेफिनेटली वो जो बाउंड्री है उनकी, वो आर्टिफिशियल बाउंड्री है। On a positive side, it has to build its bilateral and multilateral relations in such a way as to provide to its citizens the maximum advantage in today's globalizing economy while protecting them at the same time against external shocks. ठीक है? As it pursues its expanding interest farther beyond the region and at the global level, it has to be nimble footed in an increasingly unpredictable and volatile global situation. I think this is clear. I don't think there is any problem, but you are free to ask question. Okay, as a country with a huge coastline of 7,500 kilometer, having 1,200 islands and an exclusive economic zone of about 2 lakh square kilometer, not 2 lakh, it's 2 million square kilometer. India's maritime interface constitute a significant component of its strategic interest. Okay, the Mahabharata calls it Jambu Deep, island of the Chamundi, Indian blackberry tree. Okay, the maritime dimension of India's regional and global diplomacy has assumed even greater salience with the onset of globalization since the end of Cold War in 1991, as the seaborne commerce has become a critical component of this process. So this is especially true in case of this changing scenario where Indian Ocean is replacing South North Atlantic as the major area of cross-continental trade. Okay, this has meant attention not only to the general state of the oceans but also the freedom of navigation and overflight across narrow oceanic checkpoints, safety and security of the sea lines of communications, illegal exploitation of the resources of maritime zones, security threats from seas, novel rivalry between power big and small, and the efficacy of governance and mechanisms for the seas to meet and wider challenges such as negative impact of the climate change, sustainable use of maritime resources, and the overall health of oceans. So this paragraph actually shows all the challenges that this particular region has. Okay, and this will include challenge of piracy also, although that is actually there in the safety and security of sea lanes of communications. Evolving maritime geopolitics of Indo-Pacific. So why I took this particular analysis for discussion is because of its stress on Indo-Pacific. Okay, the global strategic and diplomatic discourse essentially revolves around the governance of oceanic waters for the management of threats arising from them, as well as for the exploitation of their resources for the economic development of the counter countries capable of it. The nature of threats constraining the exploitation of opportunities has expanded in recent decades from traditional based on hardcore power imbalances to the non-traditional such as climate change, piracy, and other transnational crimes and illegal fishing. And these are all the issues which are contributing in the evolution of new maritime geopolitics. In which arena? In a theater which has recently started gaining traction, that is Indo-Pacific. ओके, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर, अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पास है वो ये है कि देर आर ट्रेडिशनल एज वेल एज नॉन ट्रेडिशनल इशूज. ओके, तो ट्रेडिशनल इशूज क्या है? हार्ड कोर पावर इम्बैलेंसेस, चाइना एंड रेस्ट,
एंड नॉन ट्रेडिशनल इशूज क्या है? क्लाइमेट चेंज, पैरेसी, अदर ट्रांसनेशनल क्राइम्स, इलीगल फिशिंग, ये नॉन ट्रेडिशनल इशूज है. Whilst there is a plethora of international law concerning the use of the oceans, the actual task of creation of maritime governance systems to cope with this entire spectrum of challenges is in fact a function of the strategic interest of the countries involved. तो सिर्फ इंटरनेशनल लॉ हो जाने से वहाँ नहीं हो जाएगा कुछ. अगर आपको वहाँ पास इंश्योर करना है कि मैरीटाइम गवर्नेंस प्रॉपर तरीके से हो सके, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट. ओके, मतलब वहाँ strategic interest of countries, that is something which will be of importance here. That is not going to be ensured just by the international law. And this is where the geopolitics comes in. और यहाँ पास रोल आता है जियोपॉलिटिक्स का. ओके, देखिए आगे. The evolving geopolitical construct of Indo-Pacific. यहाँ ये फोकस है. There have been different geopolitical constructs in terms of the geographies of the two oceans, that is, namely Indian Ocean and the Pacific Ocean. And the issue for further exploration is the type of governance mechanism inherent in such constructions. The Indian and the Pacific Ocean. Formally, the International Hydrographic Organization defines the geographical boundaries of various oceans and the seas. This might be a new information for you. The International Hydrographic Organization. This is the organization which defines the boundaries. Okay. However, the kind of governance structures which come up in the different oceans and seas depend upon the interest and the power relations among the countries. So the boundaries there, which are going to be determined by this very organization, that is International Hydrographic Organization, is only a formal reality. Again, the actual reality is shaped by the countries in question here. Okay, there have not been pan-Indian Ocean or pan-Pacific Ocean structures in recent times because of the international power play prevailing at a particular time. ओके, तो इंटरनेशनल पावर प्ले का मतलब है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस स्टेट्स, उसकी वजह से क्या है, पैन इंडियन ओशन और पैन पैसिफिक ओशन स्ट्रक्चर्स जो है रिसेंट टाइम में एग्जिस्ट नहीं करते. मोर ओवर, वॉट एवर स्ट्रक्चर्स हैव कम अप बिफोर हैव कम अप हैव बीन डिवाइज्ड टू कोप विद अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट. जिस तरह के स्ट्रक्चर्स इमर्ज हुए हैं वो क्या है, they have been devised to cope with specific requirement. तो वो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है उनका जिसमें वो इमर्ज होते हैं. ठीक है. ओके, फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग द वास्ट area of our current threats as well as opportunities, most of these structures in these two oceans come far short, which by itself is both a function of the prevailing geopolitics as well as the requisite institutional capacities in the circumstances of rapidly shortening time horizons of many of them. Okay? तो वास्ट एरिया ऑफ करंट थ्रेट्स जो हैं वो जैसे कि और जो अपॉर्चुनिटीज हैं, मोस्ट ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इन दीज टू ओशियंस कम फार शॉर्ट. तो जो स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं इन 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 पर्टिकुलर ओशियंस में, पैसिफिक और ओशियन में, दे आर नॉट एनफ in meeting with the current threats and opportunities. Okay, the challenges of creating such a structure inheres in changing balance of power relationships, strategic distrust among the big powers, state fragility, timelines about the climate change mitigation targets, lack of financial and institutional capacities. तो ये जो है ये challenges हैं ऐसे structures को create करने में जो current threats को फेस कर पाए, रिजॉल्व कर पाए और करंट अपॉर्चुनिटीज को हार्नेस कर पाए. ओके, द जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट ऑफ एशिया पैसिफिक.
The familiar expression until a few years ago was that of Asia Pacific, and now it has been replaced by Indo Pacific. Okay, this is more derived from the US narrative where Asia is described as the area. Asia is described as the area including landmass comprising Southeast Asia, East Asia, including Japan and China. Okay, combined with the Pacific Ocean, this entire geopolitical construct represented, particularly during the Cold War period, a US-led security architecture to initially contain the Soviet Union and post-Cold War China. ठीक है? So I think this is clear. Working on the hub and spoke configuration, it was based on the US territories including three compact Pacific island countries, Palau, Micronesia and Marshall Islands. ये बहुत छोटी छोटी कंट्रीज छोटे छोटे आइलैंड्स हैं. मैं चाहूंगा कि आप इनको उसमें देखें ओके एटलस में, ताकि आपको यहाँ पास ये इस ज्योग्राफी का मार्शल आइलैंड आप जानते हैं 3-4 years back it was in conflict with US countries like US, North Korea, Pakistan, India. इसने एक्चुअली इन सब के खिलाफ जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में गया था ये कि all these countries have conducted nuclear tests and that has been causing a lot of harm to environment. एक्चुअली हुआ क्या, मार्शल आइलैंड वो एरिया है जहाँ पास यूएसए ने अपने मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट दैट इट हैज कैरीड आउट इज नियर मार्शल आइलैंड. तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इसको. एज वेल एज इट्स मेजर troops deployment in Japan, South Korea supported further by alliances relationship with other countries in the region, including Australia and New Zealand. ठीक है. Post-Cold War, there was a lack of US interest in Southeast Asian region, and although its force postures were retained in respect of the Far East. ठीक है. आगे देखिए, it is in the early years of this decade that the US pivot to Asia, later called rebalance, was conceived under US President Obama to pay attention to the balance of power situation in the South China Sea. मैं पहले भी इस चीज़ को बता चुका हूँ. So actually, because of against the backdrop of Chinese increasing aggressions in South China Sea and East China Sea, okay, and also because of Chinese incursive and aggressive policies, increasing militaristic outlook was threatening US allies in the region. US under Obama administration came out with policy of pivot to Asia. Okay. But that was rechristened as rebalance in Asia. Okay, तो उसमें हुआ क्या कि बाद में एक्चुअली ओबामा के लीडरशिप में, लेकिन all those policies were not successful in containing China's incursive aggressive design. ठीक है, तो that is why I wanted to discuss this much on Indo-Pacific. हालांकि इसमें और भी बहुत कुछ डिस्कस करने के लिए है, but I think we have discussed a lot, or it is already past 5 hours. तो मैं इस डिस्कशन को कंटिन्यू करूँगा अपने अगले लेक्चर में, जो मैं इसी चैनल में लूँगा. ओके, आई एम ऑल्सो टेकिंग क्लासेस ऑन स्पेशल क्लासेस ऑन यूनियन बजट, जो मैंने कंप्लीट की हैं, और मेरी आज की क्लास स्पेशल क्लास न्यू एजुकेशन पॉलिसी में. ओके, सो इफ यू वांट यू कैन attend that also. So I conclude my discussion. I will wait for a minute if you want to ask any question, और फिर मैं क्लास ख़त्म करूँगा. So I'm waiting for any question, any possible question that
Anyone may ask? Okay, so this was all about the discussion that I needed to have today. Although there are some issues which are still remaining, and that will be covered in the upcoming lectures. Okay, if you plan to subscribe any course in Unacademy, you can apply this code, that is Amit PS, to avail 10% discount. Thank you very much.